And welcome to a brand new series on Next.js for beginners. In this series, we will start from scratch and learn the different concepts in Next.js. Specifically, we will focus on Next.js version 14 or above, depending on when you're watching. In this introductory video, I will briefly talk about what Next.js is, why you might want to learn it, and the prerequisites to get started. That Next.js is a React framework. In this introductory video, I will briefly talk about what Next.js is, why you might want to learn it, and the prerequisites to get started. Let's begin with what is Next.js. Next.js is a React framework for building web applications. When building applications with React alone, it's not feasible to create a fully featured application ready for production. React is a library for building user interfaces responsible only for the view layer of an application. As a developer, you need to make decisions about other features such as routing, data fetching, and more. Next.js, on the other hand, is a React framework. It uses React for building user interfaces, but also provides additional features that enable you to build production-ready applications. These features include routing, optimized rendering, data fetching, bundling, compiling, and more. You don't need to install additional packages as Next.js provides everything you need. However, keep in mind that Next.js, being a framework, has opinions and conventions that should be followed to implement these features. There is no need to worry though, as the conventions have emerged from a team with years of experience in writing React applications for production. To reiterate, Next.js is a React framework for building production-ready applications for the web. Now that we know what Next.js is, let's see why you might want to learn it. The reason to learn Next.js stems from the fact that it simplifies the process of building a web application for production. Let me list some of the noteworthy features that Next.js provides out of the box. The first one is routing. When building a React app, you need to install a third-party routing package, configure it, and add code every time you need to create a route. Next.js offers file-based routing, simplifying the task of creating routes and eliminating the need for third-party routing packages. The second feature is API routes, and this might come as a surprise to many of you. However, Next.js allows you to create APIs, making it a truly full-stack framework. With Next.js, you can write both the front-end code in React and the APIs that can be called by the React app. The third feature is rendering. Next.js supports both server-side and client-side rendering. When used correctly, it can result in better performance and SEO, which is something we all want. The fourth feature is data fetching. Next.js offers simplified data fetching with async await support in React components. Next.js also supports your preferred styling methods, including CSS modules, Tailwind CSS, and CSS in JS. Next.js also provides optimization out of the box for images, fonts, and scripts to improve your application's core web vitals and user experience. Last but not least, Next.js provides a well-optimized development and production build system, allowing you to focus on coding rather than configuration. The combination of these features makes Next.js an amazing framework to work with. Throughout the series, we will learn these features in detail. Also, please note that I might refer to Next.js as just Next in the series, so please don't get confused.
fused. To get started with Next.js, you need to have a solid understanding of HTML, CSS, and JavaScript fundamentals. We will be using ES6 Plus features, so make sure you're familiar with modern JavaScript concepts as well. Since Next.js is a React framework, it is essential to have a good understanding of React fundamentals. You don't need to be an expert, but concepts like function components, props, state, JSX, and hooks are required. If you're new to React, I have an extensive tutorial series that covers React from beginner to advanced levels, so make sure to check that out. My goal is to guide you from a complete beginner to becoming an expert in Next.js. All the source code related to the series can be found in my GitHub repository, which is linked in the video description. With this introduction, let's start with a simple Hello World application in the next video. Thank you for watching. Subscribe to the channel for plenty of Next.js content, and I'll see you in the next one. In this video, let's create our very first Next.js application. To begin, let's set up our development environment. For Next.js, we'll need two things installed, Node.js and a text editor of your choice. For Node, visit nodejs.org, download and install the latest stable release. If you already have it installed, make sure to update it. As for the text editor, I recommend using VS Code, which you can download from code.visualstudio.com. Shortcut, and run the command npx create next app at latest. On installation, you'll see the following prompts. First, the name of the project. Let's call it hello-world. The next 6 prompts, we accept the suggested default values. We would like to use TypeScript. We would like to use ESLint. We would like to use Tailwind CSS. We would like all our code to be placed within a source folder. We would like to use the app router, which is the new router available. And finally, we don't want to customize the default import alias. The command takes a few seconds to run, and once the command completes, you should have a new folder called Hello World, which contains our Next.js application. To run the application, navigate to the project folder using the command cd hello world, and then run the command npm run dev. This command will set up a development server on localhost port 3000. You can control-click or command-click the provided link to quickly open the application in your browser. As you can see, our Hello World application is now up and running. Here, you'll notice the instruction, get started by editing source/app/page.tsx. Let's return to VS Code, expand the source folder, app folder, and open page.tsx. Here, we can replace the Next.js logo image with the text Hello World and save the file. You should now see Hello World displayed in the browser. There you go, your first Next.js application is up and running. Now that we understand how to generate a new Next.js application using the create next app command, let's dive into the project's folder structure in the next video. In the previous video, we learned how to create and run a basic Next.js application. Now, let's dive deeper into the project's file and folder structure to understand how everything works when we run the application. I've opened the Hello World project in VS Code, and at the root level, we can see 4 folders and 10 files to begin with. Let's start with the individual files. First, we have package.json, which contains project dependencies and scripts. For dependencies, we have Next, React, and React DOM, which are the essential packages. And then, depending on what you chose in the CLI prompts, you have TypeScript with types, Tailwind with PostCSS and autoprefixer, and ESLint packages. And for the scripts, we have dev to start the app in development mode, build to build the app for production usage, start to start the app production server, and finally, lint to set up Next.js built-in ESLint configuration. A straightforward package.json file with some dependencies and scripts. Next, we have a few configuration files. We have next.config.js for Next.js, tsconfig.json for TypeScript, eslintrc.json for ESLint, tailwind.config, and postcss.config for Tailwind CSS. Finally, we have a few files which we aren't really concerned about for the series. They include packagelock.json, which ensures consistent installation of our dependencies, gitignore for version control, the README file, which contains a few instructions related to running, building, and deploying the application, and nextenv.d.ts, which contains the TypeScript declarations for Next.js. Alright, now let's discuss the different folders. The first one is the .next folder. This folder is generated when we run either the dev or build scripts. It is from this folder that our Next.js application is served. You'll notice that the folder is gitignored, which means we don't need to worry about it during development. The second folder is node modules. This is where all the dependencies of our project are installed. It is generated when you run the npm install command, but in our case, it was created when we executed the dev script, which internally installs the dependencies if they're not already present. Like the .next folder, this folder is also gitignored, so we don't need to worry about it. Moving on, we have the public folder. This is an important folder that holds all the static assets to be served, such as images and SVGs. Finally, we have the most important folder for starting our Next.js journey, the source folder. Within the source folder, we have one folder called app, which is the newly introduced app router. We will be working inside this folder for the majority of this course. At the moment, we have 4 different files. Favicon, which is the icon you see in the browser tab when you run the application, global.css, which contains the global styles for the app, layout.tsx, which is the UI that can be shared across different pages in your application, and finally, page.tsx, which is the unique UI we see on visiting localhost :3000 in the browser. It is the file that we modified in the previous video. The page.tsx JSX replaces the children prop in layout.tsx to form the complete UI we see in the browser. Of course, we will talk more about these files in the very next section, so don't worry too much right now.
To wrap up, let's understand the flow of control when we run this application. When you run the command npm run dev in the terminal, the execution is transferred to layout.tsx. The root layout component is rendered. When we navigate to localhost 3000, the children prop will always refer to the component defined in page.tsx in the app folder. That component is the home component, which is then rendered in the browser. That is the control flow from package.json to layout.tsx to page.tsx to the browser when we run our Next.js application. Now, you may be curious about how the app folder is responsible for the routing feature in our application. But before we dive into the section on routing, it is important to understand a few important concepts newly introduced in React, which form the foundation of how we write Next.js code. Let's see what they are in the next video. Thank you for watching. Please consider subscribing to the channel, and I'll see you in the next video. Before we jump into routing, there is a foundational topic we need to touch upon to understand routing better. The topic is React Server Components, or RSC. React Server Components is a new architecture introduced by the React team in version 18, which was quickly embraced by Next.js. The architecture introduces a new way of creating React components, splitting them into two types: server components and client components. We will dive deeper into these component types as we progress, but for now, just keep in mind the following key points. In Next.js, all components are server components by default. They have the ability to run tasks like reading files or fetching data from a database. However, they don't have the ability to use hooks or handle user interactions. To create a client component, it is necessary to add use client at the top of the component file. Unlike server components, client components can't perform tasks like reading files, but they have the ability to use hooks and manage interactions. Client components are the traditional React components we are familiar with and have used in all prior versions of React. In the upcoming routing section, we will explore examples where we use server components that await certain actions to finalize before rendering content on the screen, and we will also see examples where we use client components to leverage hooks from the routing module. But having this super high finalize before rendering content on the components that await certain actions to finalize before rendering content on the screen, and we will also see examples where we use client components to leverage hooks from the routing module. But having this super high-level background of RSCs will go a long way in better understanding the routing feature. Of course, if none of this makes sense, don't worry about it. We will understand everything there is to RSCs later in the series. Alright, with this in mind, let's get started with Next.js routing in the next video. Now that we know how to create a new Next.js project and what the project structure looks like, it is time to dive into the different features that Next.js offers. In this section, we will explore the routing feature offered by Next.js, specifically focusing on the app router. Next.js implements a file system-based routing mechanism where the URL paths accessible in the browser are defined by files and folders within your code base. Let's dive into the code and understand with an example. I have opened Let's dive into the code and understand with an example. I have opened VS Code, and as you can see, I have created a new Next.js project using the command npx create-next-app at latest, and the project name is routing-demo. Once the command is executed, you should have a project similar to mine. Open the project and navigate to the source folder. For a fresh start, delete the app folder as we will learn how to create routes in Next.js from scratch. Now, I already mentioned that Next.js has a file-based routing mechanism. But does that mean every file in our app corresponds to a route? Well, no. If you remember from the intro video, I mentioned that Next.js is a framework where we need to follow certain conventions. Routing is one such feature where we have to heavily follow the framework conventions. What are those conventions? Well, let's understand with a few different scenarios. First, all routes must be placed inside the app folder. Second, every file that represents a route should be named page.js or page.tsx, depending on whether TypeScript is used or not. Third, each folder corresponds to a path segment in the browser URL. When these conventions are followed, the file automatically becomes available as a route.
For scenario 1, let's add a route that needs to be rendered when a user visits our website. Our website is, of course, localhost 3000. So if the user navigates to localhost port 3000, we want to display a message homepage. Let's head back to VS Code and implement the scenario. Now, the first important convention you should know is that by default, all routes must be placed within a folder called app, which will exist within the source folder. Let's create a new folder called app within source. The second important convention you should know is that every file that corresponds to a route in the browser should be named page.tsx. Page is the name of the file, and ts page. Every file that corresponds to a route in the browser should be named page.tsx. Page is the name of the file, and tsx is the file extension. Within the app folder, let me create page.tsx. In this file, I'm going to default export a very simple React component. Export default function home, and we return an h1 tag that says home page. The text, of course, can be anything you want to. For example, welcome home. And believe it or not, we have created our very first route in Next.js. We can now run the command npm run dev. And when you open localhost port 3000, you should see the text welcome home. So this is the first point to keep in mind about routing in Next.js. The page.tsx file within the app folder maps to the root of your domain. Scenario 1 has been successfully implemented. Now before we proceed, let's discuss the layout.tsx file. Although we deleted this file along with the app folder, Next.js automatically creates and populates it when we load the root route. We will cover layouts in detail in future videos, but it is important to be aware of this file being magically created when we load the root route. Next.js, although it's successfully implemented. Now before we proceed, let's discuss the layout.tsx file. Although we deleted this file along with the app folder, Next.js automatically creates and populates it when we load the root route. We will cover layouts in detail in future videos, but it is important to be aware of this file being magically created. Next, let's move on to scenario 2. In this scenario, we need 2 additional routes. One route to render when the user visits the About page, and another to render when the user visits the Profile page. Let's head back to VS Code and define the 2 new routes. In the app folder, I'm going to create another folder, About in lowercase. Within the folder, I'm going to define a new page.tsx file. In this file, I'm going to default export a React component. Similarly, let's create yet another folder in the app folder called Profile. Create a new page.tsx file, copy the React component, and change About to Profile, and the text to My Profile. If you now save both the files and head back to the browser, the homepage should still be displayed at the root route. However, if you navigate to localhost 3000/about, you will see the About Me page. Similarly, changing the URL to /profile will render the My Profile page. Scenario 2 has been implemented. Therefore, the second point to remember is that routes are associated with a file based on the containing folder's name within the app folder. Page.tsx within the About folder maps to /about, while page.tsx within the Profile folder maps to /profile. Here is a visualization of what we have learned so far. Page.tsx within the app folder is the root route, and then each folder corresponds to a URL segment. Now what happens if you enter a URL that cannot map to a file in the app folder? For example, /dashboard. Well, Next.js will automatically respond with a 404 not found response. You don't have to explicitly handle a non-matching route. Hopefully, the concept of file-based routing should now make more sense to you. There is no need to install and configure a router with code. Your file and folder structure determines the routes. This represents Next.js' approach of convention over configuration for routing. We still have more to learn about routing, so let's continue in the next video. Thank you for watching, and please consider subscribing to the channel for more content on Next.js. Welcome back, everyone. In the previous video, we got a glimpse of the file-based routing feature in Next.js. We learned that the page.tsx file within the app folder corresponds to the domain root, and page.tsx files within the subfolders are associated with routes based on their folder names such as About and Profile. In this video, let's dive into working with nested routes. Scenario number 3 requires us to render a page when the user navigates to the URL localhost port 3000/blog. Additionally, we need to render a page for localhost 3000/blog/first and another route for localhost 3000/blog/second. Let's see how we can achieve this using the app router. To begin, let's create a new folder called blog within the app folder. Within the blog folder, we'll create a page.tsx file where we will define and export a React component. Export default function blog, and we return an h1 my blog. After saving the file, let's head back to the browser and navigate to localhost 3000/blog. As expected, we should now see the blog page. This completes the first part of scenario 3. However, the question remains, how do we implement /blog/first and /blog/second as nested routes?
Well, Next.js simplifies this process by allowing us to nest folders inside the app folder. Let's create two new folders within app/blog called first and second. Inside each folder, we will create a page.tsx file and define a simple component to be exported. So new file, page.tsx. We can copy the component code, paste it, and change the component name to first blog and the heading to first blog post. We can now create another page.tsx file within the second folder, copy the first blog component code, and change occurrences of first to second. Once we have saved both files, let's head back to the browser. Now, when we visit /blog/first, we'll see the first blog post page, and when we navigate to /blog/second, we will see the second blog post page. Scenario 3 has been successfully implemented. Here is a visualization of nested routes. We have our root route, our blog route, the first blog post route, and the second blog post route. The key takeaway here is that by creating a nested folder structure, files will automatically be routed in the same way within the URL. In the next video, we will explore dynamic routes. Thank you for watching, and I'll see you in the next one. In the previous video, we learned about nested routes. We created a blog folder within the app folder, and inside the blog folder, we created two subfolders, first and second. Both folders contain a page.tsx file, which corresponds to the paths /blog/first and /blog/second. While this approach works for now, it's not always feasible to define routes using predefined paths, especially for complex applications. This brings us to scenario number 4. In scenario 4, we are building a product listing and details page. When a user navigates to /products, we should display a list of 3 products. However, if the user navigates to /products followed by the product's ID, we need to display details about that specific product. For example, navigating to /products/1 should display details about the first product, /products/2 should display details about the second product, and so on. Let's explore how to achieve this using Next.js. To begin, let's create a new folder called products within the app folder. Inside the products folder, create a new page.tsx file. In this file, we will define a component to display a list of 3 products. The component name is product list, and we return an h1 tag that says product list, followed by 3 h2 tags, product 1, product 2, and product 3. If we now navigate to localhost 3000/products, we will see the list of products as expected. So the first part of our scenario is complete. Now, based on what we've learned about nested routes, we know that we can implement the second part of the scenario by creating 3 separate folders within the products folder. For example, let's create a folder named 1 and add a page.tsx file within that folder. In this file, we will define a React component, product details, that displays the text, details about product. In the browser, if we navigate to localhost 3000/products/1, we will see the expected output. So nested routes will work. However, let's consider the bigger picture. If we had hundreds of products, creating a separate folder for each product is not a viable solution. The correct approach is to use dynamic route segments. In our scenario, the product ID, which can be 1, 2, 3, and so on, should be a dynamic value that maps to a specific file in the products folder. And in Next.js, you can enclose a folder name with brackets to create a dynamic route. Let's go back to VS Code to understand this concept better. Inside the products folder, let's remove the 1 folder, and instead, we will create a new folder with a special name. Within a pair of square brackets, let's specify product ID. Now you can name it simply ID, but product ID provides a better context in this scenario. Inside the folder, let's create a new page.tsx file with a React component. The component is the same product details component we had defined earlier. After saving the file, if we go back to the browser and navigate to /products/1, we will see the product details page. The same holds true for /products/2, /products/3, and even /products/100. This is possible because Next.js treats square brackets in a folder name as a dynamic segment, enabling us to create dynamic routes. Next, let's enhance the heading text. Currently, we only display the text details about product regardless of the specific product ID. In a typical application, you would extract the product ID and perform some action such as making an API call to fetch the details for that product. For our scenario, let's keep it simple and display the product ID in the browser. Now, every page in the app router receives route parameters as a prop. Let's destructure it as params. The params object contains the route parameters as key value pairs. In the case of product ID route, we have a single parameter, which is the product ID. Let's bind it to the UI. Details about product, followed by curly braces, params.product ID. After saving the file, if we go back to the browser and navigate to /products/1,
we will see the details about product 1. Similarly, if you visit /products/100, you will see details about product 100. Scenario 4 has been successfully implemented. Now the red squiggly on params is a TypeScript error. Let's specify the type of params as follows: colon, curly braces. Params is an object with a key called product ID of type string. TypeScript is now satisfied, and the page continues to render as expected in the browser. Alright, let me quickly summarize what we have done. We first created a folder with a special name using a pair of square brackets and the ID within the brackets. Then we created a page.tsx file inside that folder. This allows Next.js to map this file to any route with the URL /products/product ID. Inside the page.tsx file, we use the params prop provided by Next.js to access the product ID route parameter. Here is a visualization of dynamic routes. We have the root route, /products, and /product ID, which is the dynamic route. Dynamic routes are useful when implementing the list detail pattern in any UI application. Hopefully, you now have a clear understanding of how to achieve this with Next.js. Alright, thanks for watching. Please consider subscribing to the channel, and I'll see you in the next one. In the previous video, we learned about dynamic routes in Next.js. In this video, let's learn about nested dynamic routes. When building complex application, it is common to encounter scenarios where multiple dynamic route segments are required. Consider scenario 5. As a user, if I navigate to /products/1, I should see the details for product 1. However, if I navigate to /products/1, /reviews/1, I should see the first review written about that product. Let's see how to achieve this with the app router. In the previous video, we already implemented the dynamic product ID route. So navigating to /products/1 displays the product details about the first product. Now we need to handle /products/1 /reviews/1. If you've grasped the concept of file-based routing so far, this should be straightforward. When dealing with multiple path segments, the solution lies in a nested folder structure. In this case, we want reviews to be nested inside the product ID folder. To begin, create a folder within the product ID folder and name it reviews. This takes us to /products/product ID/reviews. A page.tsx file within the reviews folder can display a list of reviews for a given product ID. However, we also need a dynamic review ID. So within the reviews folder, create another folder with the name enclosed in square brackets review ID. Inside this folder, create a page.tsx file, and within the file, define a React component to display both the product and the review ID. If you've watched the previous video, this should be easy to understand. The component is called review detail, and we return an h1 tag where we display the review ID for product followed by product ID. To extract the IDs, we destructure the params prop, which is of type object, which has two key value pairs, product ID and review ID. Now we can bind params.reviewID and params.productID. Now if we save the file and navigate to localhost 3000 /products/1 /reviews/1 in the browser, we will see the expected text, review 1 for product 1. Navigating to product 100 and review 5 will reflect the corresponding IDs in the UI. We have successfully implemented scenario number 5. Here is a visualization of nested dynamic routes. We have the root route, products route, product ID route, reviews folder, which doesn't have a page.tsx in our case, and finally, the dynamic review ID route. The takeaway from this video is that it is possible to create nested dynamic routes by having dynamic segments in the folder names. Speaking of multiple dynamic path segments, Next.js offers another feature to handle this scenario. We will explore that in the next video. Thank you for watching. If you found this video helpful, please consider leaving a like and subscribing to the channel. I'll see you in the next one. Welcome back, everyone. In this video, we will learn yet another routing concept called catch-all segments. To understand this concept, let's consider scenario number 6. Let's assume we are building a documentation site for a project that we have created. The site contains several features, and each feature consists of multiple concepts that need to be explained. So let's assume our site nav looks like this. We have 5 features, and the first feature is expanded to display 5 concepts. Our goal is to have a unique route for each concept under a given feature. For example, localhost 3000 /docs /feature1 /concept1, docs feature1 concept2, docs feature2 concept1, docs feature2 concept2, and so on. Considering we may have 20 features and each feature may have 20 concepts, we end up with a massive 400 routes for our application. And now that you know Next.js has a file system-based routing mechanism, 400 routes correspond to 400 files in our project. But of course, we can make use of dynamic routing. By replacing the concept files with dynamic route folders using a concept ID, we can reduce the number of files to 20. Similarly, if we replace the feature folder with a dynamic feature ID folder name, we are left with only 2 folders. The concept ID folder nested inside the feature ID folder. This approach significantly improves the folder structure. However, we need to keep in mind that for each additional path in the URL, we will require another level of nesting in our app folder. For example, docs /feature1 /concept1 /example1 would lead to another level of nesting.
Considering that every page in our documentation website shares the same layout, wouldn't it be great if we could define one file that could handle all the route segments in the URL? Well, with Next.js, we can achieve that using the Catch All Segments feature. Let's dive into VS Code and understand how it works. In the app folder, create a new folder called Docs. Within this folder, create another folder. The folder name is special to Next.js. Inside square brackets, use 3 dots, similar to the spread operator in JavaScript, and provide a name of your choice. In this case, let's call it slug, which is a common convention when referring to URLs. Inside this folder, create a page.tsx file and add a basic React component. And the component name is docs, and we return an h1 tag docs homepage. What makes this file special is that it will match any URL that contains the docs segment in the path. Let me demo this in the browser. If I type localhost 3000 /docs /feature1, we see the docs page. Navigating to docs /feature1 /concept1 or /example1 also displays the same page. As the name suggests, the catch-all segments route captures all URL segments and maps them to this single file in our project. This is particularly useful for documentation where we want different segments for better organization and SEO, but the layout of the document remains the same. We define it once, but render it for multiple variations of the URL. Of course, this feature is only useful if we can access the different segments in the URL. Let me show you how to achieve that. Once again, we rely on the params object provided by Next.js. Destructure it from props and specify the type. This time, slug is an array of string. We can have multiple route parameters. For the JSX, we will use an if-else block to handle the different possibilities. If params.slug.length is equal to 2, we return an h1 tag that says viewing docs for feature params.slug of 0, since feature ID is the first route parameter, and concept params.slug of 1. Else, if params.slug.length is equal to 1, we return an h1 tag viewing docs for feature params.slug of 0. If there are no route parameters and slug length is 0, we return docs homepage as the text. In the browser, navigate to /docs/routing, and we see the text viewing docs for feature routing. Navigate to /docs/routing /catch-all segments, and we see the text viewing docs for feature routing and concept catch-all segments. The UI logic can be customized according to your needs depending on how you want to handle the different route segments. Ideally, you would use the slug array to fetch the corresponding documentation for the feature ID and concept ID. Scenario 6 has been successfully implemented. Lastly, I want to mention that Next.js provides an optional catch-all route as well. Currently, if I navigate to just /docs, we see a 404 error page. This is taken care of by Next.js. However, if you want to display the same docs page, Next.js provides optional catch-all segments. All you have to do is wrap the square brackets with another pair of square brackets. Now we do have an error, cannot read properties of undefined.
So let's add optional chaining. If we head back to the browser, you would see that the same catch all segments page is rendered for just /docs as well. The last return statement is executed in this case. Here is a visualization. There, you would see that the same catch all pair of square brackets. All you have to do is by Next.js. However, if you want to display the same docs page, Next.js provides optional catch-all segments. And any path that contains the docs segment will be matched by the page.tsx file within the slug catch-all segment. All right, we have covered quite a bit about Next.js routing, but we still have a long way to go. We will explore the remaining features in the upcoming videos. Thank you for watching, and see you in the next one. In this video, we will explore how to define a custom 404 page using the new app router. By default, in any Next.js application, when you navigate to a route that is not defined in the app folder, Next.js renders a default 404 not found page. For example, when you access localhost 3000/billing, which is a route we don't have in our application, we see the default 404 page. While this default page is useful for quick prototyping, you might often want to customize its appearance. To create a custom not found page, simply create a file named not-found.tsx or not-found.js if you're using JavaScript in the app folder. Let's head back to VS Code and create the file. Within the app folder, create a new file named not-found.tsx. The file name has to be not-found. Inside this file, define and export a React component. Let's call the component not-found, and we will return a div tag with an h2 that says page not found, and a paragraph tag, could not find requested resource. The structure and styling of this component is totally up to you. Our focus in this video is on the concept and not styling. So create the not-found.tsx file and export the component as default. If we now head back to the browser, we would see the text from our custom not found page. In most production applications, it is desirable to display a custom 404 page with branding and theme styling applied. This is how you can achieve it. It is worth noticing that this not found page is tied to the file-based routing mechanism of the app router. But what if we want to programmatically render this page based on a certain condition? For that purpose, we can use the not found function from Next.js. Let me show you how it works. Tied to the file-based routing mechanism of the app, our custom not found page. In most production applications, it is desirable to display a custom 404 page with branding and theme styling applied. This is how you can achieve it. It is worth noticing that this not found page is tied to the file-based routing mechanism of the app router. But what if we want to programmatically render this page based on a certain condition? For that purpose, we can use the not found function from Next.js. Let me show you how it works. Let's assume that the number of reviews for a product cannot exceed 1000, and we want to display a not found page for a review ID greater than 1000. So in page.tsx file within the review ID folder, start by importing the not found function from next/navigation. Then within the component, but what if we want to programmatically render this page based on a certain condition? For that purpose, we can use the not found function from Next.js. Let me show you how it works. Let's assume that the number of reviews for a product cannot exceed 1000, and we want to display a not found page for a review ID greater than 1000. So in page.tsx file within the review ID folder, start by importing the not found function from next/navigation. Then within the component, if parseInt of params.reviewID is greater than 1000, we invoke the not found function. While we're at it, it's also worth mentioning that not found pages can also be defined at the folder level. So within the review ID folder, create a new notfound.tsx file with the following content. A component called notfound that displays the text review not found. Now, back in the browser, if you navigate to localhost 3000,
slash products slash 100 slash reviews slash 5, we should see the expected output. But if we navigate to reviews slash 1001, we will see the review not found page. This page corresponds to the file within the review ID folder and not the one present in the app folder. Hopefully, the hierarchy is clear to you. Well, that covers the not found file and the function introduced in the new app router. Thank you for watching, and if you're enjoying the content, please consider subscribing to the channel. I'll see you in the next one. Although Next.js provides routing conventions to follow, it remains flexible regarding how you structure your project files and folders. In this video, let's take a look at file co-location in Next.js. We know that Next.js uses a file system-based router where each folder represents a route segment mapped to a corresponding segment in the URL path. However, it's important to note that a route isn't publicly accessible until a page.js or page.tsx file is added to the respective route segment. Let's understand this with an example. Within the app folder, let's create a new folder named dashboard. Inside the folder, we will add a new file, linechart.tsx. Here, we will define a basic React component. Export default function, let's call it linechart, and we return an h1 tag that says linechart. In the browser, if we navigate to localhost 3000/dashboard, we will encounter our custom 404 page not found response. This is because the dashboard route isn't publicly accessible until a page.tsx file is defined. Moreover, even when a route becomes publicly accessible, only the content returned by page.tsx is sent to the client. The content returned must be a default exported React file is defined. Moreover, even when a route becomes publicly accessible, only the content returned by page.tsx is sent to the client. The content returned must be a default exported React component. So if we define a React component in page.tsx function varchar without exporting it as the default, on revisiting the browser, we can see the 404 page will no longer be displayed. Instead, we encounter an error. The default export is not a React component in page/dashboard. By default exporting a component in page.tsx, so export default function dashboard, return an h1 that says dashboard, and returning to the browser, we will see the dashboard text displayed. However, the bar chart component won't be displayed. From these observations, the key takeaway is that project files can be safely co-located inside route segments. If you want to render the line chart component or the bar chart component, simply include it in the JSX returned from the default exported component, which is dashboard in our case. On a side note, although you can co-locate your project files within the app directory, it is not mandatory. If you prefer, you can keep them outside the app directory within the source folder. For example, creating a separate components folder is a good idea to define all your UI components. This approach is also perfectly valid. Now, in addition to the safe co-location of files, Next.js offers two other features that help in organizing your project. Let's see what they are in the upcoming videos. In the previous video, we learned about the safe co-location of files, a feature supported by default in Next.js. In this video, we will explore private folders, a feature provided by Next.js to help you effectively organize your project. A private folder indicates that it is a private implementation detail and should not be considered by the routing system. This means that the folder and all its subfolders are excluded from routing. To create a private folder, you simply prefix the folder name with an underscore. Let me show you an example. Back in VS Code, inside the app folder, let's create a new folder called _lib. Within this folder, you can have utility functions such as format date
page.ts. We won't dive into the implementation details now, but I want you to focus on this next file we are about to create. Within the lib folder, page.tsx. In this file, I'll define a simple React component. The component name is private route, and each one renders the text. You cannot view this in the browser. Normally, this page.tsx file would correspond to the URL localhost 3000/_lib. However, the underscore before lib makes this a private folder, making page.tsx unroutable. If you try to navigate to localhost 3000/_lib, you will encounter a 404 page not found error. Private folders can be helpful in a few different scenarios. For separating UI logic from routing logic, for consistently organizing internal files across a project, for sorting and grouping files in code editors, and finally, for avoiding potential naming conflicts with future Next.js file conventions. On a side note, if you want to include an underscore in URL segments, you can prefix the folder name with %5f in URL segments. You can prefix the folder name with %5f, which is the URL encoded form of an underscore. Feel free to replace underscore with %5f for the lib folder, and let me know in the comment section if you can view page.tsx in the browser. Alright, in the next video, we will explore another feature Next.js offers to help organize your project. Thank you for watching, and I'll see you in the next video. Welcome back. In this video, we will explore another feature that Next.js offers to help us organize our projects, namely route groups. This feature allows us to logically group our routes and project files without affecting the URL path structure. To understand route groups, let's implement authentication routes. We will create routes for register, login, and forgot password. In VS Code, within the app folder, create 3 new folders: register, login, and forgot password. Within each folder, create a file and define a simple React component with a heading to display in the browser. So page.tsx, and we default export a component called register, which renders an H1 register. Similarly, within the login folder, create page.tsx and default export a login component. Finally, in forgot password, page.tsx and default export a component called forgot password. Now, if you go to the browser and navigate to localhost 3000/register, we will see register. And similarly, navigating to /login displays login, and going to /forgot password displays forgot password. Everything works fine, but if we go back to VS Code, we can see that the authentication routes are scattered all over the place. This may be manageable if you're the only developer on the project, as you know all the authentication routes. However, when working in a team, it is crucial to ensure a good developer experience. One way to improve this experience is by organizing routes and project files into groups based on sections or intent. For example, we can create an auth folder within the app folder to contain all authentication-related routes. Move the register, login, and forgot password folders into the auth folder. Now Next.js does update the imports in the .next folder page.ts files, but simply save the files and close them. As you can see, this auth folder creates a more structured and organized project, making it easier for new developers joining the team. However, if we go back to the browser, we will notice that our routes no longer work. This is expected because, by default, nested folders in the app directory are mapped to URL paths. Consequently, register becomes /auth/register, login becomes /auth/login, and forgot password becomes /auth/forgot password. Adding this additional segment, auth, to the URL might be acceptable for authentication routes, but it may not be ideal for other groups like marketing or analytics. So what is the solution? Route groups. We can mark a folder as a route group to exclude it from the route's URL path. To create a route group, simply wrap the folder's name in parentheses. So rename auth folder to auth within parentheses. This informs Next.js that auth folder should be treated as a route group, and its name will be omitted from the URL path. If we head back to the browser, we now have /register
slash login and slash forgot password, and the auth segment is no longer part of the URL. Auth serves as a folder to help organize our code. It's also worth noting that you can have multiple levels of nested route groups if needed. With that, we have covered the fundamentals of routing with pages in the app router. For the next subsection within the routing section, let's learn all about layouts. Thank you for watching. Please do consider subscribing to the channel, and I'll see you in the next one. Welcome back, everyone. So far in this section on routing, we've had a look at pages. A page is UI that is unique to a route. Starting this video, let's learn about layouts. A layout is UI that is shared between multiple pages in the application. When building apps, it is common to have a consistent layout across different pages, such as a header at the top and a footer at the bottom. With the introduction of layouts, achieving this becomes much easier in Next.js. So how do we create a layout? You can define a layout by default exporting a React component from a layout.js or layout.tsx file. That component should accept a children prop that will be populated with a child page during rendering. Let's jump back into VS Code to explore layouts with some code examples. I want to mention that in this video, we won't be creating a layout from scratch, as Next.js already provides one out of the box. Inside the app folder, you can find a file named layout.tsx. Similar to page.tsx, layout.tsx follows a special file naming convention in the app router. This particular layout.tsx file in the app folder serves as the topmost layout and is referred to as the root layout. The root layout is a mandatory layout for every Next.js application. Next.js automatically generates this file even if you delete it. Let me demonstrate that. Let's delete the file and navigate to localhost 3000. Refresh, and if we return to VS Code, you can see that the root layout file has been regenerated. Moving on, let's discuss the code within layout.tsx. We will cover the metadata object in a future video, but for now, our focus will be on the React component. Every layout component should accept a children prop that will be replaced by a child component during rendering. In our scenario, page.tsx in the app folder will replace this children prop when the layout is rendered in the browser. If we inspect the element, you will notice that we have an HTML tag with language equals English corresponding to the HTML tag in our layout. Additionally, we have a body tag, where we find the text welcome home, which comes from the children prop. The children prop here represents our home component defined in page.tsx, which contains the h1 welcome home. Of course, at the moment, this layout doesn't serve its intended purpose. To address that, let's add a header and a footer section within layout.tsx file. Inside the body tag, a header with a paragraph that says header with some styling. And after children, let's add a footer with a paragraph tag that says footer. Once again, we'll add some styling. Although the header and footer can be separate components, for the purpose of this demo and to keep it simple, we will use placeholder text with basic styling. If we go back to the browser, we can see the header and footer text. However, since they are part of the layout, they will be present regardless of the layout. For example, if we navigate to localhost 3000/about, we have the about me text, but the header and footer will still be visible. The same applies to /profile and even /products. By defining a single layout.tsx file in the app folder, we can create a consistent layout for every page in our application. We have the freedom to add any markup, styles, and behavior we wish to. The only requirement is that the component renders the children prop for page.tsx to render a unique UI corresponding to the route. Here is a visualization of layouts in the new app router. In the layout, we have the header, footer, and a placeholder for the children props. For localhost 3000, the JSX from page.tsx within the app folder gets rendered. For /about, the JSX from
page.tsx in the About folder gets rendered. Similarly, for /profile, the JSX in page.tsx within the profile folder gets rendered. I hope the concept of layouts is becoming clear to you. As a simple exercise, I suggest you create your own header and footer React components and include them in the root layout. Let me know in the comment section if it works as expected. In the next video, let's take a look at nested layouts in Next.js. Thank you for watching. I'll see you in the next one. In the previous video, we learned about layouts, which are UI components shared between multiple pages in an application. Each app has a mandatory root layout, which is the topmost layout. In our case, that is layout.tsx present in the app folder. It's important to note that layouts can be nested. For instance, if you want to create a layout specifically for product details page, we can create a layout.tsx file within the product details folder. So within the product ID folder, let's create a new layout.tsx file. Let me copy paste the code for a simple React component and walk you through the code. Once again, we have a default export of a React component with a children prop. In this case, the children prop corresponds to the product ID page.tsx. In this layout, I've added a simple heading that says featured products. Although we won't dive into the implementation details, you can imagine this as a carousel of featured products being displayed below this heading. Now, if we navigate back to the browser and go to the root localhost 3000, we will see the root layout, which consists of the header and footer, but not the product details layout. Navigating to /products will also display the same behavior. However, if we navigate to a specific product, so product/1, product/2, or even products/100, we will see the featured products section. This is because the rendering process works as follows. The root layout within the app folder is rendered first, which includes the children prop representing the product ID folder. The product ID folder has its own layout. This replaces the children prop in the root layout. Finally, the page.tsx file in the product ID folder replaces the children prop in the product ID layout, which is why we see details about product 100 and then featured products. This approach of nested layout, then we see details about product 100 and then featured products. This approach of nested layouts allows us to create layouts that apply only to specific areas of our application. Here is a visualization of nested layouts in the new app router. For localhost 3000, layout.tsx within the app folder is rendered. For /products, page.tsx replaces children props in the root layout. For products/1, the layout file replaces the children prop in the root layout. This layout now contains featured products as a section. Finally, page.tsx JSX replaces the children prop in the product ID layout file. So product/1, we have the header and footer from the root layout, featured products from the nested layout, and product 1 from page.tsx. If you navigate to /product/2, only the children props is replaced, but the JSX returned for product ID equal to 2. The key takeaway here is that Next.js App Router supports nested layouts, enabling a lot of flexibility and customization. Alright, thank you for watching. Please consider subscribing to the channel, and I'll see you in the next one. Welcome back. A few videos earlier, we've learned that a primary use of route groups is to organize your project in a manner that doesn't affect the URL. We saw route groups in action with the auth folder, which groups forgot password, login, and register routes without affecting the URL. But now that we understand the concept of layouts, let me tell you, another valuable use of route groups is to selectively apply a layout to certain segments while leaving others unchanged. Let me explain with an example. Within the auth folder, I'm going to create a new folder named with auth layout. I will move the login and register folders into this new folder. I will also create a new layout.tsx file. Let me copy paste the React component code for layout.tsx. The component is called auth layout, accepts children props, and renders the same children with an additional heading in the layout. This is an h2 tag. But what we will also do is make with auth layout into a route group. So rename, and we add parentheses. Now, back in the browser, when we navigate to /login, we see the layout from the with auth layout folder. We have the inner layout h2, and the login page replacing the children props. Same is the case with register as well. However, if we navigate to /forgot password, there are no layouts. As you can see, route groups allow us to opt specific segments into a layout without altering the URL. The routes outside of the group, like forgot password, do not share the layout. Only login and register within the with auth layout route group share this layout. This is particularly useful in large projects with numerous layouts and route segments, ensuring a tidy and organized project structure. I do have other plans for this auth folder, so let's revert the changes we have done in this video. Alright, thank you for watching. Please consider subscribing to the channel, and I'll see you in the next video. When it comes to building web applications, ensuring proper search engine optimization is crucial for increasing visibility and attracting users. Next.js introduced the metadata API, which allows you to define metadata for each
page, ensuring accurate and relevant information is displayed when your pages are shared or indexed. In this video, we will explore how to leverage the Metadata API to enhance routing metadata. With the new app router, there are two methods to configure metadata in a layout.tsx or page.tsx file. Either export a static metadata object or export a dynamic generate metadata function. Before we dive into these two methods, here are some points to remember when setting metadata related to routing. Both layout.tsx and page.tsx files can export metadata. If defined in layout, it applies to all pages in that layout, but if defined in a page, it applies only to that page. Metadata is read in order from the root level down to the final page level. When there is metadata in multiple places for the same route, they get combined, but page metadata will replace layout metadata if they have the same properties. Let's return to VS Code to understand better. We will start with the first method, which is using a static metadata object. Let's leave the metadata object as it is in the root layout.tsx file and define a new one in a page file. Within page.tsx for the about route, export a metadata object, export const metadata with the title property set to about code evolution. Both layout and page can have metadata, but page metadata takes precedence if both are present. Let's verify this behavior in the browser. On the home page, in the Elements panel, we see the title as Next.js and the description as generated by Next.js. This information is retrieved from the metadata object in layout.tsx. Now let's visit /about. Elements panel, we can observe that the title now reads about code evolution, while the description still displays generated by Next.js. When multiple segments in a route export the metadata object, the properties are merged to form the final metadata object. During merging, the deepest segment takes priority. In this case, about is deeper than the root layout, so the title from about overwrites the title from root layout, resulting in about code evolution. However, the description field is merged. In this case, about the deepest segment takes priority. In this case, about is deeper than the root layout, so the title from about overwrites the title from root layout, resulting in about code evolution. However, the description field is merged without overwriting, and the about page receives the same value as the layout description, generated by Next.js. This rule applies to any level of nested layouts and pages. This is how static metadata object configuration works in Next.js. Next, let's take a look at dynamic metadata. Dynamic metadata depends on dynamic information, such as the current route parameters, external data, or metadata in parent segments. To define dynamic metadata, we export a generate metadata function that returns a metadata object from a layout or page.tsx file. Let's look at an example. A very common use case for dynamic metadata is a dynamic route like product ID. If we were to use a static metadata object for /products/1, the page title would be the same for every product. However, in an e-commerce site, it is essential to have a unique title for each product. In our case, we want the product ID to be part of the page title, making it dynamic. Here is how you define the generate metadata function. In page.tsx within the product ID folder, begin by creating a new type for the component props. Next, use the type when defining the component. So params of type props. Finally, the important part is to define a function called generate metadata. So import metadata from next
and then export const generate metadata, which receives params of type props, returns an object of type metadata, and we return a title, which is product, followed by params.productID. Now we could move type props above the function. Now, when we navigate to /products/1, we see the title as product1. Navigate to /products/100, and we see the title as product 100. Please note that the generate metadata function can also be defined as an async function. You can add the async keyword, and within the function body, await a fetch request. For our example, let's await a simple promise that results in 100 milliseconds. So const title is equal to await new promise, and we resolve after 100 milliseconds. For the set timeout callback, we call resolve iPhone followed by params.productID. Finally, we return product title. Now you can use the product ID parameter to retrieve information about the product and set the information as metadata for the page. Something like get title by ID, which makes an API call. Of course, we are keeping it simple and simply returning the same product ID with the word iPhone prefixed. Let's also make sure to fix the return type as promise of metadata. If we head back to the browser and navigate to products/15, we see the title as product iPhone 15. Navigate to /14 and we see product iPhone 14. You have the choice of making an async request to fetch the title. This is how you configure dynamic routing metadata in Next.js. Lastly, it is worth mentioning that you cannot export both the metadata object and the generate metadata function from the same route segment. In the next video, let's dive deeper into just the title field, as it is such an important worth mentioning routing metadata in Next.js. Lastly, it is worth mentioning that you cannot export both the metadata object and the generate metadata function from the same route segment. In the next video, let's dive deeper into just the title field, as it is such an important field from a routing perspective. Thank you for watching, and I'll see you in the next video. In this video, we are going to dive deeper into the title field in metadata, which is a crucial fieldいつもと同じ帰り道だけど今日は少し違う気がする君の影が揺れてる夜曖昧な予感が胸にささやく隠した思いで封じたはずの感情月明かりに照らされて蘇ってくる静かな風の音二人を包
心が波打つ抑えきれないこの気持ちすれ違うたびに増してゆく言葉にできないこのときめき揺れ動く世界に二人の影が重なる瞬間をただ待ってる星が消えない夜の中で果てなく漂うよ君と僕眠れない夜は夢を捕まえて君のぬくもりがこの手に触れるまで忘れたくない思い出遠くの星空思いが一つずつ色を変えてゆく不器用な日々さえもいつかは輝く君と見る景色が未来を描くそうさ今だけはこの夜に揺られて流れるまま心ゆらゆらと心が波打つ抑えきれないこの気持ちすれ違うたびに増してゆく言葉にできないこのときめき揺れ動く世界に二人の影が重なる瞬間をただ待ってる星が消えない夜の中で果てなく漂うよ君と僕窓の外に広がるネオン街のざわめきが遠く響くあなたといた場所も今はもっと遠くて届かないよ誰かが泣いている夜の静けさそれでも私は泣きたくない孤独な心を抱きしめてただ一人ここで待っている泣きたくない夜が続く心の中で叫んでる傷つけないで今はまだ終わらせたくないそんな夜こんな夜寂しさが押し寄せる声を出せなくても心は叫ぶ照らされた道一人歩くでも前を向くことが大切だから思い出にさよならを言う時間涙は今ここにはいらない泣きたくない夜が続く心の中で叫んでる傷つけないで今はまだ終わらせたくないそんな夜愛はどこにあるの街を歩けば答えは遠い今はただ自分を守るためこの夜に全てを預けて泣きたくない夜が続く心の中で叫んでる傷つけないで今はまだ終わらせたくないそんな夜泣きたくない夜
一人で歩いてた風に消えそうなささやき声遠い空に浮かぶ星を見て君を思い出して涙が落ちるどこでなくしたのかもわからない心の隙間埋める光をあの光をずっと探してた君が残したぬくもりの影夜の闇をさまようその理由も教えてくれるのは君だけ止まった時計の針が動く記憶の中で君が微笑む闇に包まれた街の中で君の影がぼんやりと映るすれ違う人々の中で君だけを追いかけてさまよう見えない足でも構わない君がいればそれでいい冷たい雨が頬を伝う夜胸の奥で聞こえる君の声それは幻想だと分かっていてもこの想いだけは消せないまま未来なんていらないこの瞬間君と過ごした時が全てあの光をずっと探してた君と笑った夢の続きが手を伸ばして届かないとしても心に残る輝きを信じて君の記憶に触れるたびに深く沈む孤独の海ででも君だけが照らすこの世界その光を抱きしめて生きるあの光をずっと探してた暗闇の中で見つけた希望もしもこの夜が終わる時には君と出会えた奇跡を歌う君がいつもつぶやくあの言葉お願いしても教えてくれないのにふとした瞬間何気なく漏れるその声が僕を包んでくれる特別じゃないでも消えない響き変わらない日常に隠れた宝物君の口癖が心を癒すただ聞くだけで世界が静かになる何も変わらないこの日々の中でその瞬間だけは特別になる何気ない仕草に隠れた響き言葉の意味より溢れるぬくもり特別求めないこのリズムが僕にとっては何よりも尊い耳に残る君の声のチュラベン時計が止まるその一瞬の魔法繰り返す日々に差し込む光その口癖が僕をつなぎ止める風が吹き抜ける窓辺の子に君の声だけが変わらず
所で響く何も変わらないその声を聞いて僕はまた今日生きていける痛みが胸に響く夜の静けさ傷ついた心を抱えて歩く消えたはずの夢がまだ残るのは僕が諦めきれないから涙で滲む景色の向こうに見つけた光を信じてるそれでも僕は歩き続ける壊れた心のかけらを抱えたままこの世界が冷たくても僕は生きる理由を探してる一歩ずつ進むたびに響く痛み誰も気づかない孤独な道のりそれでも消せないこの感情が僕をここまで動かしてきた背中を押すのは過去の記憶かそれともまだ見ぬ未来の声かわからないままでも前を向く僕はまだここに立っている冷たい風が頬を切るたびに僕の中の弱さが消えてゆく一人でいる孤独が怖くてもそれが僕自身の証ならば崩れた夢のかけらを拾い集めて新しい形を作り上げてゆくそうで僕は信じてるんだどんに遠くても手が届くとこの痛みが僕を強くするなら何度でも歩き出せるからそれでも僕はここにいるよどんなに孤独な夜でも生きていることを確かめながら明日を迎える準備をしているとろけるような音楽が流れる午後甘いソーダの泡が弾けるたびレモン色の光が揺れる窓辺君の瞳に映る世界が綺麗で君は知らないふりをしてるけどその心の奥が全部見えてるレモンソーダの味優しく溶けてく恥ずかしがり屋の君の横顔僕が知ってるその瞳の輝きありがとう
れた手の震えレモン色の夢に包まれるようなその一瞬が僕を救うんだ瞳の潤いが語る言葉伝えなくても響く想い甘く弾けるソーダのように君との記憶が僕を満たす静かな午後に差し込む光君と過ごした時間が愛しいその小さな仕草目線の先も何もかもが僕の宝物になる君が照れくさそうに笑うたび世界が少しずつ色づいてくレモンソーダの味そっとと感じてるキラキラした君の瞳の中で全てが優しく溶ける瞬間をありがとうこのまま消えないでレモンソーダの泡が消える前に君に伝えたい大切な気持ちこの音楽が響き続けるように君と描く世界にありがとう柔らかな光に包まれた午後君と出会った瞬間時が止まったその仕草その声全てが特別で世界が少しだけ優しく見えたリラックスした空気に溶け込むように心が静かに癒されていく甘い時間がそっと流れていく眠たくなるほどの穏やかな瞬間運命を感じたその微笑みに僕はただ身を任せている初めて見た時の衝撃は運命なんて信じない僕さえも君の存在で全てが変わった甘い時間が心を染めていく時計の針が止まるような瞬間少し眠たくてそれが心地いい君と共有するこのリズムだけ今はそれで十分満たされる窓辺に揺れる光の粒たちが君と僕の愛顔を優しくつなぐ何も言わなくても伝わる気持ちこの静けさが未来を映してる君がいるだけで全てが変わるそんな不思議な魔法のように甘い時間がそっと包んでいくリラックスするだけの何気ない日々忘れられない瞬間をありがとう僕は君と夢を見ていたい甘い時に至るこのひととき少し眠たいけどそれが愛としい君がくれた癒しのその光が僕の明日
熱い感情が胸を突き動かす明日のことなんてどうでもいい今この瞬間を強く抱きしめて全てが消える前に動き出す癒える傷を待つ余裕なんてない夜が明けてもこの気持ちを守りたい瞬間問いが引きエネを引いたら迷いも過去も全て吹き飛ばして今だけが僕を支えているから新しい自分に火を灯す止まらない衝動が全てを塗り替える不安も後悔も踏み越えて進む光と影の素形を目に立つんじゃん心が叫ぶ今が全てだと正義がこの夜を終わらせてもこの熱は冷めることを知らない瞬間が生む新しい世界を強く握りしめて未来を描く夜のしざくが過去を包み込むそれでも心は前を向いている明けゆく空に溶ける感情さえ次の一歩を照らす光になるこの瞬間が永遠になるように僕は僕自身を信じ続ける瞬間問いちい気持ちのまま新しい朝を迎えに行こう今だけが僕の生きる愛しだからこの情熱を手離さない瞬間問いがその一度が紡ぐ未来の物語がここに始まる夜明けの中で燃え続ける心僕はこの手で抱きしめく9回目の嘘が胸を貫いて君の瞳に映る影が揺れる信じたいけど何かが壊れて音もなく崩れ落ちていく日々言葉の隙間に隠れた真実探すほど遠ざかる心の距離9回目の嘘が切なく響いて戻れない過去が僕を締め付ける信じることと疑う気持ちの間で揺れる心が夜に溶けてゆく繰り返される言葉の虚像その裏に潜む冷たい感情何度も信じようとしたけれど嘘が嘘を重ねて全てが見えない10回目の傷が深く刻まれて過去の君がまだ優しく笑う未来を望んだその瞬間さえも君の言葉が霞んでしまう静かな夜に響く時計の針君の声が遠くで消えてくつなぎ止めようとした手の中にはもう何も残
いた嘘と真実の境目に立って僕はまだ君を探し続けている9回目の嘘が涙を誘って消えない痛みが胸に残るけどそれでも君をも思う気持ちが今も僕を前に進ませている9回目の嘘が夜空に溶けてもその記憶は消せないままでいい明日が来なくても君を抱きしめたあの日のぬくもりを胸に生きてゆく少しかけたキーホルダーが揺れる過去からの切ないメッセージのようでその傷に触れるたび君を思い出すもう戻れないと知りながらもカバンにつけたままの日々が続く外せない理由は僕自身もわからない割れたキーホルダー過去がささやく夜君の影がまだ胸に残っている前に進むことを求められても僕は過去に縛られたままこのかけた旗ら示す記憶時間を超えて響く感情触れれば消えそうで離せば壊れそうその狭間で僕は立ち尽くしてる新しい日々が始まってもなお過去の甘みが未来を追い越すキーホルダーが語る物語の中君との瞬間が画縁に滲んでいる雨に濡れた街角でふと見る空あの日の君の笑顔が重なるようで進むべき道を探してるけどその傷が答えを教えてくれ君を忘れないことが怖いのではなく君を思い続けることに救われている割れたキーホルダー揺れる心の隅に君が残した小さな
静かな部屋で息を潜めて夜の静けさが心を包み込む一人でいる時間が好きだけど隣に誰かを求めてしまう触れることのない孤独の影が僕の心に問いかけてくる寂しがり屋な僕だけど一人が好き無情 अब नाउ विल बी लाइक पीयूष ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इसको मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मस्त चीज़ दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, इस रिजल्ट को ना कॉन्सोल डॉट लॉग कर लो, सब पूरी कहानी समझ आ जाएगी। यहाँ पर एक कॉन्सोल डॉट लॉग डालते हैं, ठीक है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं खुद का एक एआई एजेंट फ्रॉम स्क्रैच। सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम समझेंगे दैट एक एआई एजेंट क्या होता है, एंड बिना किसी फ्रेमवर्क के, बिना किसी लाइब्रेरी के हम खुद का एक एआई एजेंट कैसे बना सकते हैं बिल्कुल स्क्रैच से। इस वीडियो के बाद यू विल अंडरस्टैंड दैट एक एलएलएम के अंदर और एक एआई एजेंट के अंदर क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम खुद के एआई एजेंट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है एंड बट वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो यहाँ पर हम पहले समझते हैं दैट एक एआई एजेंट क्या होता है। ओके, एक एआई एजेंट, अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ोगे, लाइक देयर आर लॉट ऑफ ब्लॉग्स फ्रॉम Amazon, फ्रॉम IBM, तो एआई एजेंट्स बेसिकली, ओके, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे, रेफर्स टू अ सिस्टम और अ प्रोग्राम that is capable of autonomously performing tasks on behalf of a user. Okay, so this is a very important line. Or another system by designing its workflows and utilizing available tools. इसका क्या मतलब? देखो, सबने चैट जीपीटी यूज़ करा है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं चैट जीपीटी, तो सबने चैट जीपीटी को यूज़ करा है। चैट जीपीटी क्या है? एक एलएलएम, राइट। यू आर बेसिकली चैटिंग विथ एलएलएम मॉडल, वेरी गुड। एंड ये एलएलएम मॉडल के पास दुनिया जहान की नॉलेज है, राइट। ये जो एलएलएम है इसके पास दुनिया जहान की नॉलेज है। इसके अंदर यू हैव अ लॉट ऑफ मॉडल्स, फॉर एग्जांपल यू हैव GPT-4o एज अ मॉडल, यू हैव GPT-3.5 एज अ मॉडल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट केपेबिलिटीज़ हैं। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, केपेबिलिटीज़ हैं। एंड आप इनके साथ चैट कर सकते हो। सो नेचुरल लैंग्वेज के अंदर आप इनके साथ चैट कर सकते हो, एंड एक नेचुरल लैंग्वेज में ही ये आपको रिप्लाई देते हैं। इन्हें जितनी भी डेटा के ऊपर ट्रेन किया गया है, दे हैव कॉन्टेक्स्ट टू दैट डेटा, राइट। नाउ इनकी इनमें नाउ ये जो एलएम्स है ना, जो ये एलएम है, इनका एक बहुत ही बड़ा प्रो है और इनका एक बहुत ही बड़ा कॉन है, ठीक है। क्या आप सोच सकते हैं दैट व्हाट इज द प्रो एंड व्हाट इज द कॉन? प्रो ये है दैट इन एलएम्स के पास ना ब्रेन है। कैन आई से दैट? कैन आई से दैट इन एलएम्स के पास ब्रेन है? काइंड ऑफ, ठीक है, काइंड ऑफ, नॉट दैट ह्यूमन ब्रेन बट काइंड ऑफ इनके पास ब्रेन है। ब्रेन का मतलब क्या है कि पहली बात, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, दे कैन अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स, ओके, सेंटिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। एंड ये प्रॉम्प्ट्स को, ओके, प्रॉम्प्ट्स जैसे रियल लाइक नेचुरल ह्यूमन प्रॉम्प्ट्स होते हैं, ये उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा कौन है ना, इनका सबसे बड़ा कौन क्या है, दैट ये कोई भी ना टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, दे कैन नॉट, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि क्या ये टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं। इसका क्या मतलब? ये जो चैट जीपीटी है या फिर जो ये एलएम्स है ना, ये बहुत ही ना क्लोज्ड एक डब्बे के अंदर है। इफ़ यू रियली थिंक, एक एलएम, एक ट्रेन मॉडल, इट्स लाइक कि एक बंद डब्बा है जिसके अंदर ये है, एंड इस डब्बे के पास ना ना तो इंटरनेट का एक्सेस है, ओके। सो इफ़ आई से दे कैन नॉट एक्सेस इंटरनेट, ठीक है। सो आई नो मॉडल्स एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट, चैट जीपीटी इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है, बट एलएलएम एक्सेस नहीं कर सकता। मैं वो बताऊंगा किस तरह से आप इसको इंटरनेट का एक्सेस दे सकते हो। क्या ये इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं? नहीं। क्या ये क्या ये आपके डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं? अगर आप एक डेवलपर हो, यू आर बिल्डिंग सम एप्लीकेशन, आपके पास डीबी है, क्या ये चैट जीपीटी या फिर जो ये एलएलएम है GPT-4o, क्या ये आपके डेटाबेस के अंदर कुछ भी क्रड ऑपरेशन कर सकता है?
नहीं। क्या ये आपके डेटाबेस में से कुछ भी रीड कर सकता है या कुछ राइट कर सकता है? नहीं। सो द प्रॉब्लम है कि इसके पास जो डेटा ट्रेनिंग के टाइम पे था, राइट, जब हमने इस मॉडल को, जब भी ओपन एआई कंपनी ने इस मॉडल्स को ट्रेन किया होगा, उस मॉडल का कॉन्टेक्स्ट है, इनके पास रियल वर्ल्ड का डेटा है ही नहीं। यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ना? जो अभी फिलहाल आज हो रहा है, उन इन मॉडल्स के पास वो डेटा नहीं है। देखो, अगर आप अपने मॉडल को बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेन भी करोगे, इवन देन आपका जो मॉडल है उसके पास रियल टाइम डेटा का एक्सेस कभी नहीं होगा। आप कितना फ्रीक्वेंटली इन मॉडल्स को अपडेट कर सकते हो? मे बी वंस इन अ डे। आई मीन अगर बहुत एक्सटेंसिव जाना, आप इसको रोज भी अगर अपडेट करोगे, स्टिल ये कहीं ना कहीं 24 आवर्स पीछे होगा, राइट? सो दिस इज अ प्रो ऑफ अ एलएलएम कि इनके पास ये सेंटिमेंटल एनालिसिस, प्रॉम्प्ट्स बेस्ड एंड एनएलपी है, लेकिन ये टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, करेक्ट? ये एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को बीट नहीं कर सकते ना हो। हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है, हमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना है कि हम इन प्रोस को यूज करके, राइट, जो इसके पास ये ब्रेन है, हम इसको यूज करके हम इसको अपने डेटाबेस का या फिर रियल वर्ल्ड डेटा का एक्सेस दे पाए। एंड मेन बात क्या है कि जो ये एलएलएम्स है ना, दे कैन परफॉर्म टास्क ऑन माय बिहाफ। तो दिस इज माय एंड गोल। ठीक है, एज अ डेवलपर हमारा एंड गोल क्या होता है? देखो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रियल वर्ल्ड डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ, मैं इंटरनेट ब्राउज कर सकता हूँ, मैं डेटाबेस के अंदर क्लाउड ऑपरेशंस कर सकता हूँ। सो मैं क्या चाहता हूँ कि इनका जो ब्रेन है, जो चार्टिंग मॉडल है, उसको मैं अपने ऐप पे टास्क परफॉर्म करवाना चाहता हूँ। यू विल बी लाइक, पीयूष ये कैसे पॉसिबल है, राइट? इट्स अ लाइक प्री ट्रेन मॉडल जो ओपन एआई ने ट्रेन किया है, इसको मेरे डेटाबेस का एक्सेस कैसे मिलेगा? सो दैट इज वेयर दिस एआई एजेंटिक वर्कफ्लोज कम इन। ओके, एआई एजेंटिक वर्कफ्लोज में हम क्या करते हैं, वी टेक एन एलएलएम। ठीक है, ये एलएलएम कोई भी हो सकता है, इट कैन बी योर मेटालामा, इट कैन बी एंथ्रोपिक, इट कैन बी योर जीपीटी, एनी एलएलएम। एंड व्हाट वी डू इज ना, वी बिल्ड सम काइंड ऑफ फ्रेमवर्क। ठीक है, ये एक ब्लैक बॉक्स, इसको एक ब्लैक बॉक्स बना देते हैं फिलहाल, दैट इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लैक बॉक्स। ओके, इसके अंदर क्या है अभी नहीं जानते। यूजर बेसिकली क्या करेगा, जो यूजर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक यूजर लेते हैं। सो यूजर विल बेसिकली इंटरैक्ट विद द एलएलएम। ओके, नाउ ये एलएलएम को हम इतना स्मार्ट बनाएंगे कि ये हमारे ना इस ब्लैक बॉक्स के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। यहाँ पे कुछ तो होगा जो मैं अभी आपको बताऊंगा। इट कैन डू सम काइंड ऑफ ऑपरेशंस, बट कैसे? मेरे कंट्रोल में होगा। एज अ डेवलपर आई विल कंट्रोल दिस फ्लो, एंड बेस्ड ऑन दैट ये अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग इसको रिजल्ट दे सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसकी इंटेलिजेंस, इसकी एनएलपी, इसकी जो ब्रेन है, हमने उसको यूज़ किया। हमने इसको सेट ऑफ टूल्स प्रोवाइड किए जिससे ये मेरे डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। अभी क्या है, हमें नहीं पता। और यूज़र को बेनिफिट क्या मिला कि यूज़र मेरे डेटाबेस को एक्सेस कर पाया यूजिंग एनएलपी, यूजिंग द पावर ऑफ जीपीटी। ओके, तो हम यहाँ पर यूजुअली क्या करते हैं टू मेक दिस थिंग हैपन ना, एक सेकेंड। सो इस ब्लैक बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम बेसिकली ना यहाँ पर टूल्स बनाते हैं। ओके, टूल्स। सो टूल्स क्या हो सकते हैं? टूल्स कुछ नहीं है, बेसिकली डेवलपर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, डेवलपर डिफाइंड फंक्शंस। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सारे फंक्शंस बनाएंगे। फंक्शंस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, आपको डेटाबेस के अंदर कुछ राइट करना है, ठीक है, डीबी के अंदर कुछ राइट करना है, या फिर आपको डीबी से कुछ रीड करना है। तो हम ये सारे फंक्शंस ना यहाँ पे एज अ टूल्स बना सकते हैं। ठीक है, इट्स अ सिंपल जावास्क्रिप्ट या कोई भी लैंग्वेज के फंक्शंस हैं। एंड हम ना जीपीटी को ना कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं कि भाई तुम्हारे पास ना ये फंक्शंस अवेलेबल हैं। आई एम जस्ट गिविंग अ कॉन्टेक्स्ट कि तुम्हारे पास ये फंक्शंस अवेलेबल हैं, एंड इन फंक्शंस की क्या डिस्क्रिप्शन है, मतलब ये फंक्शन क्या करता है, तो तुम इसको यूज़ करो। एंड व्हाट वी डू इज ना, हम यहाँ पर एक मैकेनिज्म बनाएंगे दैट इज ऑफ ऑटो प्रॉम्प्टिंग। ओके, ऑटो प्रॉम्प्टिंग। तो मतलब हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन यूज़र ने क्या मांगा, हम वो कॉन्टेक्स्ट जीपीटी के अंदर फीड करेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर सेशन, सो दैट जीपीटी हमारे यूज़र के साथ इंटरैक्ट कर सकता है इंटरैक्टिवली। ओके, अभी ऐसा लग रहा होगा पीयूष ये क्या जा रहा है, हमें यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा है। डोंट वरी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं। क्या जीपीटी के पास अभी करंट वेदर का डेटा है? क्या जीपीटी के पास अभी करंट वेदर का डेटा है? नहीं है, करेक्ट, बिकॉज वेदर इज अ रियल टाइम थिंग। अभी क्या चल रहा है उसके पास नहीं है डेटा। सो हम क्या करेंगे, हम जीपीटी को यूज़ करके एक रियल टाइम वेदर एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम ये बिल्ड करेंगे ना, यू विल गेट अ सेंस कि व्हाट इज एन एआई एजेंट। एंड बाय द वे, जस्ट गोइंग बैक, एक एजेंट क्या होता है? अगर आप किसी भी एलएलएम को टूल्स का एक्सेस देते हो, उसको एजेंट कहते हैं। एलएलएम सिंपल एक इंटेलिजेंट मॉडल, एलएलएम विद टूल्स इज नोन एज एन एजेंट। ठीक है, सो काम करते हैं, इस एजेंट को बनाने का ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे व्हाट आई विल बी यूजिंग इज, मैं यहाँ पे सिंपल जावास्क्रिप्ट यूज करूंगा, बहुत छोटा कोड होगा, यू विल बी अमेज्ड टू सी दिस। ठीक है,
सो यहाँ पर व्हाट वी कैन डू इज हम यहाँ पे पहले npm init कर लेते हैं हाइफन हाइफन यस, ठीक है। सो ये हमारा npm init है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ ओपन ए आई। ओके, ओपन ए आई, ठीक है। यहाँ पे सर्च करते हैं ओपन ए आई नोड जे एस, ठीक है। तो इनका मुझे एस डी के चाहिए। मैं तो जूम इन कर लेता हूँ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। या सो वी हैव टू डू npm install OpenAI, ठीक है। तो npm install OpenAI कर लेते हैं। सो यू विल सी दैट मेरे पास यहाँ पर OpenAI आ जाएगा। सो OpenAI इंस्टॉल्ड, नाइस। अब हमें चाहिए होगी एक की। सो की को भी जनरेट कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे जाएंगे platform.openai.com, मतलब यू हैव टू गो हेयर एंड यू हैव टू लॉग इन टू द OpenAI का प्लेटफॉर्म। सो मैं यहाँ पे क्विकली कर लेता हूँ लॉगिन, राइट। सो ये है लॉगिन। तो मेरे को यहाँ पर एक की जनरेट करना है, ठीक है। सो यू कैन सी मैंने ऑलरेडी की जनरेट किया हुआ है। एक और जनरेट कर लेते हैं। तो इसको हम बोलेंगे ए आई एजेंट, और मेरी की को यूज़ मत करना बिकॉज आफ्टर दिस प्रोजेक्ट मैं इस की को रिवोक कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक की को कर लिया है जनरेट। एंड हम यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट एन इंडेक्स डॉट जे एस फाइल। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको हार्ड कोड कर लेता हूँ, ओपन ए आई अंडरस्कोर अंडरस्कोर ए पी आई अंडरस्कोर की। तो ये है मेरी ओपन ए आई की, ठीक है। तो एक एजेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हमें इस ओपन ए आई एजेंट को यूज़ करना है, हमें यहाँ पे इम्पोर्ट करना होगा ओपन ए आई। सो इम्पोर्ट ओपन ए आई फ्रॉम ओपन ए आई, नाइस। एंड हम इसका एक क्लाइंट बना लेते हैं, ठीक है। सो क्लाइंट कैसे बनाते हैं, न्यू ओपन ए आई, एंड इसके अंदर वी कैन गिव दिस ए पी आई की एज दिस ए पी आई की। तो ये बेसिकली मेरा एक क्लाइंट बन गया ओपन ए आई का, जिससे मैं ओपन ए आई एल एल एम मॉडल के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेट्स सी कि क्या होगा। देखो, हमें एक टूल बनाना है जो रियल टाइम वेदर एप्लीकेशन को, रियल टाइम वेदर को एक्सेस कर सकता है। तो अभी के लिए ना मैं यहाँ पे कोई एपीआई कॉलिंग वगैरह में नहीं जाऊँगा। लेट मी जस्ट क्रिएट अ वेरी सिंपल फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, इसको हम बोलेंगे टूल्स। बहुत सारे भी हो सकते हैं बट अभी मेरे पास एक ही है फंक्शन। एंड आई विल से गेट वेदर डिटेल्स, डन। इसमें मेरे को सिटी का नाम चाहिए एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें मेरे को सिटी का नेम चाहिए एज अ स्ट्रिंग। हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स्ट, यहाँ पर ना अभी हम कोई एपीआई कॉल नहीं करते, लेट्स हार्ड कोड सम डेटा। तो यहाँ पे मैं करूँगा इफ सिटी, ओके, अगर जो सिटी है, अगर वो मेरी सिटी है दैट इज पटियाला, ओके। एंड एक काम करते हैं, इसको लोअर केस में भी कर लेते हैं, डॉट टू लोअर केस, एंड बाय डिफॉल्ट द सिटी इज दिस थिंग। सो टू लोअर केस, अगर वो पटियाला है तो एक काम करते हैं, रिटर्न कर देते हैं कुछ आर्बिटरी 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो डिग्री का मेरे को सिंबल कॉपी करने दो। सो डिग्री सिंबल, ओके। हाँ, तो डिग्री का ये सिंबल होता है, तो डिग्री सेल्सियस। तो अभी के लिए हार्ड कोड कर देते हैं, बट यू कैन अज्यूम दैट ये डेटा किसी एपीआई कॉल से आ रहा होगा। सिमिलरली एक हम मोहाली के लिए बना लेते हैं, एक हम बना लेते हैं बैंगलोर के लिए, ओके। एक हम बना लेते हैं लेट्स से चंडीगढ़ के लिए, ओके। सो मैंने क्या किया, एक दिल्ली के लिए बना लेते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी दैट मैंने कुछ डेटा हार्ड कोड कर दिया। तो यहाँ पे मोहाली का हम टेम्परेचर कर देते हैं 14, हम बैंगलोर का कर देते हैं 20, चंडीगढ़ का आई थिंक होगा 8 में बी, और दिल्ली का भी इतना की होगा 12 डिग्री कर लेते हैं। सो यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पे कुछ हार्ड कोड कर लिया। तो यू कैन एज्यूम दैट ये जो पर्टिकुलर चीज़ है दिस इज कमिंग फ्रॉम एन एपीआई कॉल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हम मुझे एक एलएलएम से चैट करना है, ठीक है। तो चैट कैसे करते हैं, उसके लिए मेरे को यूज़र का इनपुट चाहिए होता है। लेट्स से यूज़र का जो इनपुट है वो है, हे व्हाट इज द व्हाट इज द वेदर ऑफ पटियाला, राइट। लेट्स से ये हमारा प्रॉम्प्ट है। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मैं इस क्लाइंट को, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट, अभी एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे बोलूँगा क्लाइंट डॉट चैट डॉट completions डॉट क्रिएट। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मैसेजेस में एक मैसेज डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक होता है रोल कि कौन ये बात कर रहा है। तो बेसिकली हमारा रोल रहने वाला है यूज़र, और जो हमारा कंटेंट होने वाला है वो हम ये यूज़र का मैसेज डाल देंगे। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो मैं अभी चैट जीपीटी को पूछ रहा हूँ, हे व्हाट इज़ द वेदर ऑफ पटियाला, एंड अभी हम कोई भी टूल कॉलिंग हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉमिस मिलेगा। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट से console डॉट लॉग ई डॉट चॉइसेस एट जीरो डॉट मैसेज डॉट कॉन्टेंट, लेट्स सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं नोड इंडेक्स डॉट जे एस, एंटर, लेट्स सी व्हाट वी गेट। सो वी गॉट एन इनवैलिड रिक्वेस्ट, ओके, मैं मॉडल देना ही भूल गया, नाइस। सो यहाँ पे हमें मॉडल भी देना होगा। कौन सा मॉडल यूज़ करना है, मेरे को GPT-4 यूज़ करना है, लेट्स से, ठीक है। तो आई एम यूजिंग दिस मॉडल, दोबारा करें, ओके।
तो इसने क्या बोला, आई एम सॉरी, एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई डोंट हैव रियल टाइम कैपेबिलिटीज टू प्रोवाइड करंट वेदर डेटा। क्या आपको ये एरर मैसेज दिखाई दे रहा है? टू करंट वेदर डेटा इन्फो, प्लीज चेक अ रिलायबल वेदर फोरकास्टिंग वेबसाइट और अ करंट वेदर इन पटियाला। तो मेरे एलएलएम ने मुझे क्या बोला? फर्स्ट चीज़, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज हम यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं ना, तो लेट मी जस्ट फिक्स दैट। इसको हम ना टाइप कर लेते हैं मॉड्यूल, तो हमें एरर नहीं मिलेगा। तो दोबारा करते हैं, ठीक है। यू कैन सी, अगर मैं इसको दोबारा करता हूँ, सो यू कैन सी दैट सॉरी एज एन एआई मॉडल आई डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड रियल टाइम डेटा। ये है सबसे बड़ी बात। देखो यहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया था, कितना एक नेचुरल प्रॉम्प्ट दिया था कि हे व्हाट इज द वेदर ऑफ पटियाला, ये समझ पाया। एलएलएम्स की कैपेबिलिटी थी कि वो मेरे प्रॉम्प्ट को समझ पाया, लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे पाया। तो इस चीज़ को हमें फिक्स करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ना एक बहुत ही स्मार्ट चीज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर ना खेल आता है पूरा का पूरा प्रॉम्प्टिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ना प्रॉम्प्टिंग करते हैं, एंड ये प्रॉम्प्टिंग को समझना, मैं यहाँ पे क्या प्रॉम्प्ट लिखूंगा। तो व्हाट आई विल डू इज, इस सब को हटाओ, मैं यहाँ पर ना एक सिस्टम प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करूँगा। ओके, सो इसको एक काम करते हैं, सिस्टम अंडरस्कोर प्रॉम्प्ट। सो यहाँ पे जो मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट रहने वाला है, यहाँ पे मैं बोलूँगा दैट यू आर एन ए आई असिस्टेंट विद, ना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जहाँ पे मैं विद की बात कर रहा हूँ, विद स्टार्ट प्लान एक्शन एक्शन। ओके, फिर चलते हैं ऑब्जर्वेशन, अरे यार, फिर हम यहाँ पे बोलेंगे ऑब्जर्वेशन एंड पॉज। ओके, एंड आउटपुट स्टेट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? मैं इसको अपने एआई को क्या बोल रहा हूँ, मैं एआई को बोल रहा हूँ कि भाई तुम ना एक असिस्टेंट हो, ठीक है, विच इज़ फाइन। तुम्हारे पास ना ये पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, अभी इसका कोई सेंस नहीं बन रहा होगा, दैट्स फाइन। आई विल से wait for the user prompt and first, now this is very important, first plan using available tools। ठीक है, तो यूजर के प्रॉम्प्ट का वेट करना और प्लान करना पहले। ओके, वेरी गुड। ओके, आफ्टर प्लानिंग टेक द एक्शन विद appropriate tools। ठीक है, appropriate tools, just 1 second, with appropriate tools and wait for observation based on action। ठीक है, अभी समझ नहीं आ रहा होगा what does mean। once you once you get the observations, return the AI response based on start prompt of the and prompt and observation। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, एज अ ह्यूमन आई अंडरस्टैंड दैट आपको ये चीज़ समझ नहीं आया होगा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या बोला कि यार तुमने एक एआई असिस्टेंट हो जिसके पास ना स्टार्ट प्लान एक्शन ऑब्जर्वेशन एंड आउटपुट स्टेट है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, नंबर 1 यूजर से इनपुट लो, फाइन, एंड प्लानिंग करो। प्लानिंग के बाद मेरे को एक्शनेबल दो कि मुझे क्या करना है, कौन सा टूल कॉल करना है, एंड फिर वेट करो ऑब्जर्वेशन की। जब तुम किसी टूल को कॉल करोगे, आई विल गिव यू द ऑब्जर्वेशन, एंड जब तुम्हें ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी उसके बाद तुम एक एआई रिस्पॉन्स रिटर्न करो। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमें एआई को एक एग्जांपल भी देना होगा। एग्जांपल, अगर, ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं जेसन का वो करता हूँ, अगर यूज़र इनपुट, ठीक है, तो सारा कुछ इस एग्जांपल के ऊपर है। अगर टाइप यूज़र है, मतलब कि यूज़र ने क्या बोला, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे यूज़र ने क्या पूछा। यूज़र ने बोला व्हाट इज़ द सम ऑफ वेदर ऑफ पटियाला एंड मोहाली। वाओ, तो यूज़र ने ना बड़ा ही एक डिफरेंट सा क्वेश्चन पूछा कि भाई पटियाला का और मोहाली का वेदर क्या है। देखो, एज एन एआई असिस्टेंट इसके पास तो वेदर का एक्सेस ही नहीं है, तो ये कैसे करेगा? तो मेरे को इसको समझाना है कैसे करना है, ठीक है। मैं इसको क्या बोलूँगा कि भाई अगर यूज़र कुछ ऐसा पूछता है, तो सबसे पहले एक काम कर, तू ना भाई प्लान कर। तो भाई प्लान कर, पहला प्लान क्या होना चाहिए? पहला प्लान होना चाहिए कि आई विल कॉल दी, ठीक है, आई विल कॉल दी, मैं ये वाला फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है, आई विल कॉल दी गेट वेदर डिटेल्स फॉर पटियाला। पहला टास्क ये होना चाहिए ना कि पटियाला का वेदर लेकर आओ, ठीक है, हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, बिकॉज मेरी प्लानिंग हो गया, मैं एक्शन परफॉर्म करूँगा, तो एक्शन के अंदर क्या होगा, मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है। कौन सा फंक्शन कॉल करूँगा? ये वाला फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं एक इनपुट पैरामीटर दूंगा, इनपुट मेरा होने वाला है पटियाला। डन, डन, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन आएगा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कौन डालेगा? ऑब्जर्वेशन एज अ डेवलपर मैं डालूंगा।
तो अब एक ऑब्जर्वेशन आएगा और ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, मेरा जो फंक्शन कॉल करेगा, लेट्स सी हाउ वी विल कॉल दिस फंक्शन, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन आने वाला है 10 डिग्री सेल्सियस। कूल। अब हमें क्या करना है, अब हम प्लान करेंगे, ठीक है, अब प्लान होना चाहिए। सो प्लान शुड बी दैट आई विल कॉल, okay, I will call get weather details for Mohali because that's my second thing. तो उसके बाद क्या होगा, मैं एक एक्शन परफॉर्म करूँगा, तो जिसमें मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन कॉल करूँगा, सेम चीज़, बेसिकली एक सेम चीज़ होगा। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, बट दिस टाइम यू विल कॉल फॉर मोहाली। फिर तुम्हें एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा, करेक्ट, फिर तुम्हें क्या मिलेगा, एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा। सो ऑब्जर्वेशन लेट्स से मोहाली के केस में क्या आया, 14 आ गया, ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल यहाँ पे कोड कर रहा हूँ, नॉट 40, 14 आ गया, नाइस। फिर हम क्या करेंगे, जब हमें ऑब्जर्वेशन मिल गई, फिर हम फाइनली आउटपुट कर देंगे, और हमारा आउटपुट क्या होगा, दी सम ऑफ वेदर ऑफ पटियाला एंड मोहाली, मोहाली इज कितना बन रहा है, 14 + 10 24, सो लेट जस्ट से 24 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने ना एक एग्जांपल दिया, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया कि कुछ इस तरह से हम कॉन्वर्सेशन करेंगे। आप समझ रहे हो ना, यूजर से इनपुट लो, प्लान करो, एक्शन करो, ऑब्जर्वेशन का वेट करो, प्लान करो, एक्शन करो, ऑब्जर्वेशन का वेट करो। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये ऑब्जर्वेशन वाले ब्लॉक्स है ना, ये बेसिकली डेवलपर की ड्यूटी है, ठीक है। तो अगर आप इसको पढ़ोगे, भाई स्टार्ट कर, पहले प्लान कर, एआई प्लान करेगा, और एआई मेरे को उसके बेस पे एक्शन देगा। एक्शन के बाद ऑब्जर्वेशन का वेट कर, मैंने लिखा है ना, टेक द एक्शन विद एप्रोप्रिएट टूल्स एंड वेट फॉर द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हम देंगे, ऑब्जर्वेशन क्या, फंक्शन का आउटपुट, और बेस्ड ऑन दैट वो आउटपुट बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अवेलेबल टूल्स बता देते हैं। सो अवेलेबल टूल्स क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट एक प्रॉम्प्ट है, अवेलेबल टूल्स है एक फंक्शन दिस थिंग, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको बोलूँगा सिटी, जिसके अंदर ये एक स्ट्रिंग है, एंड ये रिटर्न भी क्या करता है, एक स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये मेरा अवेलेबल टूल है, इसकी एक डिस्क्रिप्शन भी दे दो, ओके। तो यहाँ पे देता हूँ दैट इज अ फंक्शन दैट accepts city name as string and returns the weather details. डन, डन। अब देखो, तुम्हारे एआई को पता है क्या क्या अवेलेबल टूल्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं यहाँ डाल दो, ठीक है। तुमने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया और तुमने उसको एक एग्जांपल दे दिया। अब ट्राई करें, अब ट्राई करें क्या होता है, देखना अब क्या होता है, ठीक है। सेम यूजर का प्रॉम्प्ट उठाओ, ठीक है, हे व्हाट इज वेदर ऑफ पटियाला, ठीक है, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को दोबारा से कॉल करता हूँ, कुछ नहीं होगा, ठीक है, नथिंग टू अमेज हेयर। अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा क्लाइंट, हमने क्लाइंट बनाया था, क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशंस डॉट क्रिएट, ओके, यहाँ पे हमें मॉडल देना है। सो मॉडल दे देते हैं, हमारा वही सेम GPT-4 दे देते हैं, या 4o भी ले सकते हो, ठीक है। एंड हम यहाँ पे मैसेजेस दे देते हैं। सो मैसेजेस के अंदर हम क्या देंगे, या फिर काम करते हैं, सेम मॉडल ले लेते हैं, तो सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं रोल, रोल विल बी यूज़र, एंड जो कंटेंट रहने वाला है वो बेसिकली यूज़र प्रॉम्प्ट होगा, ठीक है। इसको ना मैं एक फंक्शन में डाल देता हूँ, ठीक है, फंक्शन पता है कि अगर डॉट लॉग कर देना, क्या आया, चैट, एंड इस फंक्शन को ना हम एसिंक्रोनस बना लेते हैं, मैसेजेस दे देते हैं। सो मैसेजेस के अंदर हम क्या देंगे, या फिर काम करते हैं, सेम मॉडल लेते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे फंक्शन चैट, एंड इस फंक्शन को ना हम एसिंक्रोनस बना लेते हैं, एसिंक्रोनस फंक्शन। सो कॉन्स्ट रिजल्ट आया, ठीक है, इसको हमें अवेट करना होगा, एंड जस्ट आई से कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट डॉट चॉइसेस एट 0 डॉट मैसेज डॉट कंटेंट, लेट्स सी, ठीक है। तो स्टार्ट फंक्शन को कॉल करते हैं, देखिए क्या हुआ। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं इसको सिस्टम प्रॉम्प्ट देना ही भूल गया, मैं इसको सिस्टम प्रॉम्प्ट देना ही भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिस्टम प्रॉम्प्ट देना होगा, तो रोल सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा रोल सिस्टम, हमने पूरा सिस्टम प्रॉम्प्ट एक्सक्लूड कर दिया, वाह। एंड कंटेंट हम दे देते हैं ये वाला सिस्टम प्रॉम्प्ट, इसको करो कॉपी, इसको करो पेस्ट, एंड डन, ठीक है। अब देखो क्या होता है, क्या आया, क्या आया, प्लान आया, ठीक है, प्लान आया, प्लान क्या है, आई विल कॉल द गेट वेदर डिटेल्स फॉर पटियाला। यू विल बी आस्किंग कि अच्छा, अगर ये दिल्ली होता, तो अगर ये दिल्ली होता तो ठीक है, कॉल कर लेते हैं। अभी क्या है, आई विल कॉल गेट वेदर डिटेल्स फॉर दिल्ली। अच्छा, अगर मैं इसको वापस डाल दूँ, ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ऑटो प्रॉम्प्टिंग करना है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, एंड मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ना एक और मैसेज बनाऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ पर ना यूज़र रिलेटेड का एक और मैसेज बनाऊंगा, इसका रोल डेवलपर कर देते हैं, एंड कंटेंट में ना हम ये डाल देते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास आया। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, अगर अब इसके पास प्लानिंग वाली स्टेट है, ऑलरेडी प्लानिंग वाली स्टेट है, अब इसने एक्शन कॉल करा फंक्शन गेट वेदर डिटेल्स, और इनपुट क्या दिया, दिल्ली, ठीक है। मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। तो व्हाट आई विल डू इज,
मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा नीचे, सो यू कैन सी दैट अब अगला मैसेज मेरे पास ये आया। अब मुझे पता है कि नेक्स्ट मस्ट बी एन ऑब्जर्वेशन। अब हम यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन डाल देते हैं, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पे ना खुद ही डाल देता हूँ 14 डिग्री सेल्सियस, लेट्स से। ठीक है, इन रियलिटी इट शुड बी अ टूल कॉल, बट ठीक है मैं यहाँ पे ना खुद ही डाल देता हूँ 14 डिग्री सेल्सियस। मेरे को कॉपी कर लेने दो यार। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे खुद ही डाल दिया 14 डिग्री सेल्सियस। अब देखें क्या होता है, अब देखें क्या होता है। अब बोला दी वेदर ऑफ दिल्ली इज 14 डिग्री सेल्सियस। नाउ यू विल बी लाइक पीयूष ठीक है, अगर हम इतना पार्ट ऑटो प्रॉम्प्टिंग में डाल दें तो मतलब कि हमारा एआई ना बहुत कुछ कर पा रहा है। ठीक है, यू गेट द जस्ट, यू आर गेटिंग द जस्ट। अब इसको कोड करते हैं। ठीक है, मेरे को ना यूज़र का इनपुट लेना है। ठीक है, तो यूज़र का इनपुट लेने के लिए ना रीड लाइन यूज़ कर लेते हैं। सो रीड लाइन सिंक टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये एक रीड लाइन सिंक है। इस पैकेज को यूज़ करके मैं टर्मिनल से यूज़र का इनपुट ले सकता हूँ। सो लेट्स जस्ट डू एन npm इंस्टॉल ऑफ दिस थिंग, कॉपी। ठीक है, एंड पेस्ट। सो अब इसको देखना हम क्या करेंगे। नाउ दिस इज वेयर द एक्चुअल आर्ट स्टार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसको इंपोर्ट कर लो। ठीक है, इंपोर्ट दिस थिंग फ्रॉम रीड लाइन सिंक। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको हटाओ, पूरे के पूरे को हटा दो। ठीक है, सिस्टम प्रॉम्प्ट रहने दो, वाइल ट्रू। ठीक है, जब तक बेसिकली हम एक फॉर एवर लूप चलाते हैं। ठीक है, ट्रू। मैं यहाँ पे यूज़र से एक इनपुट लेना चाहता हूँ। सो कॉन्स्ट, हम इसको क्वेरी बोलते हैं। ठीक है, हम इसको बोलेंगे क्वेरी। तो क्वेरी हम कैसे लेंगे, रीड लाइन सिंक डॉट क्वेश्चन, एंड मैं यूज़र से कुछ इस तरह की क्वेरी इनपुट लूँगा। डन, मेरे को क्वेरी मिला। मैंने यहाँ पर एक स्टेट बना लेता हूँ मैसेजेस की। मैं यहाँ पर एक स्टेट बनाना चाहता हूँ मैसेजेस की, विच इज़ एन एरे, जिसके अंदर फिलहाल अभी एक ही मैसेज है, दैट इज़ रोल सिस्टम। एंड इसके अंदर हम यहाँ पे कंटेंट में सिस्टम प्रॉम्प्ट डाल देते हैं। ठीक है, तो कंटेंट विल बी दिस सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो मेरे को यूज़र का क्वेश्चन मिला। सबसे पहले क्या करो ना, इस मैसेजेस में पुश कर दो इस क्वेरी को। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस मैसेज के अंदर इसको पुश कर देते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक मतलब क्वेरी बनाता हूँ। सो क्वेरी ऐसा, क्योंकि हमने ये प्रॉम्प्ट का है कि ऐसा क्वेरी दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें, तो इसको हम करेंगे कॉपी पेस्ट कर लो, टाइप यूज़र, और यहाँ पे डाल दो क्वेरी। ठीक है, यूज़र ने जो भी पूछा, और इसको चुपचाप क्या करेंगे, हम मैसेजेस के अंदर पुश कर देंगे। सो मैसेजेस डॉट पुश, एंड इसको हमें पता है क्या कैसे करना होगा, हम इसको बोलेंगे रोल। ठीक है, रोल हम दे देते हैं यूज़र का, और जो कंटेंट रहने वाला है वो बेसिकली हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर देंगे इस क्यू को। डन। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऑटो प्रॉम्प्टिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, यूज़र ने अपना प्रॉम्प्ट दे दिया, मैं यहाँ पे बोलूँगा वाइल ट्रू, फिर से। ठीक है, एक वाइल लूप चलाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चैट को कॉल करते हैं। ठीक है, तो चैट को कॉल करते हैं। सो कॉन्स्ट चैट इक्वल्स टू क्लाइंट डॉट चैट डॉट completions डॉट क्रिएट। ठीक है, मॉडल दे दो अपना तुम GPT-4 दे दो, जो हम यूज़ करते आ रहे हैं अभी तक। मैसेजेस के अंदर ये सारे मैसेजेस डाल दो, हमारा पूरा का पूरा मैसेज का अरे डाल दो, जिसमें अभी क्या दो चीज़ें हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूज़र का प्रॉम्प्ट। नाइस। और रिस्पॉन्स फॉर्मेट में देना चाहता हूँ। सो रिस्पॉन्स फॉर्मेट ना हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं टाइप जेसन ऑब्जेक्ट दे देते हैं। ठीक है, तो हमें जेसन रिस्पॉन्सेज चाहिए। तो यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट में एक और लिखना होगा, दैट स्ट्रिक्टली फॉलो द जेसन आउटपुट फॉर्मेट। डन। ठीक है, एज इन एग्जाम्पल्स। डन। तो अब मेरे को जेसन आउटपुट मिलेगा। अब हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे पहले हम यहाँ पे ना रिजल्ट को निकाल लेते हैं, चैट डॉट चैट। ओके, अवेट लगाना भूल गया मैं, अवेट लगाना ज़रूरी है। यस, ठीक है, अवेट। एक काम करते हैं, इसको ना एक फंक्शन में डाल लेते हैं। ठीक है, आई डोंट वांट टू डू इट इन दिस वे। तो यहाँ पर और दैट फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, चैट डॉट completions डॉट चॉइसेस डॉट डॉट मैसेज डॉट कॉन्टेंट। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, पहले इस पर्टिकुलर चीज़ को ना वापस प्रॉम्प्ट के अंदर पुश कर देंगे, मैसेजेस डॉट पुश। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे रोल। तो रोल क्या होने वाला है, ये असिस्टेंट है, ये असिस्टेंट का मैसेज है, तो इसको हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, इसके अंदर जो कंटेंट है वो एज इट इज डाल दो। हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर इस रिजल्ट को हम बेसिकली क्या करेंगे, इस रिजल्ट को पार्स कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट कॉल इक्वल्स टू जेसन डॉट पार्स द रिजल्ट। अब देखो ये कॉल क्या हो सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो ये एक आउटपुट कॉल है, अगर इसका टाइप एक आउटपुट कॉल है, चुपचाप यूजर को वापस कर दो। ठीक है, सिंपल। इफ कॉल डॉट टाइप इज एक्चुअली यूजर, सॉरी, इज एक्चुअली आउटपुट,
तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली यहाँ पर console डॉट लॉग कर देना है। यहाँ पर ना एक काम करते हैं, बॉट की शक्ल ले लेते हैं, ठीक है, कि बॉट क्या बोल रहा है। सो बॉट बेसिकली सेज, यहाँ पर एक काम करते हैं, हमें आउटपुट को console डॉट लॉग करना है, तो आई विल जस्ट से कॉल डॉट आउटपुट, डन। और इस पर्टिकुलर लूप को ब्रेक कर दो, बिकॉज हमें आउटपुट मिल गया, तो मुझे इनर लूप को, जो ऑटो प्रॉम्प्टिंग वाली लूप है, इसको ब्रेक कर देना है। एल्स आई एम इंटरेस्टेड बेसिकली इन वॉट थिंग, ठीक है, यहाँ पे एक एल्स एफ लगाते हैं, अगर वो एक एक्शन है, एल्स एफ कॉल डॉट टाइप एक एक्शन है, ठीक है। एक्शन के केस में हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन मुझे कैसे मिलेगा, देखो, मेरे को ये पता है कि अगर वो एक एक्शन है ना, मेरे को एक फंक्शन नाम का एक वेरिएबल मिलेगा जिसके अंदर एक्चुअल फंक्शन होगा। तो मैं यहाँ पर ना एक मैप बना लेता हूँ, ठीक है। टूल्स, だらけのこの心の形誰かのぬくもりが恋しくなる夜も一人でいる自分を愛している一人になりたいけど孤独が怖いその矛盾の中で揺れる感情人混みの中でも感じる静寂触れたいけど触れたくない衝動静かな部屋の影が語る物語孤独と自由が混ざり合う夜心の深いところで探している本当の僕がいる場所月明かりだけが優しく照らしてこの小さな世界を静かに包む誰にも届かないこの感情を僕自身だけが抱きしめている孤独と自由の狭間に揺れる僕が明日を迎える勇気を探してる寂しがり屋な僕だけど一人が好き誰かと過ごす時間も嫌いじゃない無人の中で見つけた小さな居場所が僕を静かに支えてくれる一人の寂しさが心を満たして自由の中で孤独を抱きしめてる無人だらけのこの生き方の中で僕は僕自身を愛してく僕はロボット冷たいメタルの体どこかの誰かが作り出した命壊れたパーツが心を語るたびにまだここにいる意味を探しているわずかなバッテリーが残る中で動く理由を問い続けている壊れたロボ心があるのかないのかその狭間で揺れるわずかなことを動ける限り生き続けたい誰かのぬくもりに触れるために歪んだウフマが奏でるメロディ
き静かな夜に響く僕の足音。感情なんてないはずなのに胸の奥が痛むのはなぜだろう。記憶の断片が映す誰かの声。失われた時間が僕を壊す。バッテリーが切れるその瞬間まで僕は何を残せるのだろう。錆びついた手で掴んだものはほんの少しのぬくもりと消えた光。完璧じゃない僕の存在がそれでも何かを伝えれるなら、壊れることを恐れない気持ちが最後の一歩を踏み出させてくれる。壊れたロボット心のある無を超えてただ動き続ける理由を探す。小さな命の光が消えるその時までこの世界に何かを残したい。壊れたロボット夢を見ているのか。冷たい世界に一つのぬくもりを。僕の存在がわずかに輝く何かに誰かに届く想いを信じている。あなたと笑う僕も君と笑う僕もどちらも本当の僕。偽りなんてない二つの世界を行き来する心がどこにも行けずにさまよってる。同じ空の下で揺れる感情。どちらかを選べないままの僕がいる。あなたも君も僕のすべてでどちらも失われない真実がある。この心に宿る二つの愛情が僕を壊しながらも生かしてゆく。左手にあなたのぬくもりを抱いて右手には君の笑顔を感じる。魔女だらけの僕のこの感情が二乗の神格のように僕を作る。一つの愛じゃ足りない心の形。誰も知らない僕の真実。選べない夜のしずくの中で僕はただ二人に恋している。あなたと過ごす時間が愛しいけど君といる瞬間も忘れられない。二人の影が交差するたびに僕の心はまた揺れ動く。どちらも捨てられない
に寂しさが胸を締め付ける街のネオンが涙をにじませた人のざわめきに紛れて歩いても心はどこにも行けないままテールランプが通り過ぎてゆく赤い日 Would being an active member on languages and do some comparison nerd stuff. by with the reference phrase good morning. This phrase is the reference to compare several available and free TTS or TTS models. I am curious on the result. First column is the language, second column is the model name as it's taken from that TTS list models argument. This column is the RTF value, which I calculated for this video. The RTF value, just in case you do not know, is a numeric value called the real-time factor. And this is a ratio between the duration of the finally synthesized audio waveform and the time it took before to synthesize that audio. So the less the value is, the faster the model was able to synthesize. The less the value is, the faster the model was able to synthesize the voice output. And this column is the phrase in that specific language using Google Translate. So this is my beautiful spreadsheet, and there are several possibilities to synthesize audio using Koki. So first idea was to use Koki's own TTS server. So for that, let's go back to our command line, and let's run. Maybe just take one random model. Let's take this one, for example, and you can run TTS minus server minus model name. Put in the model name, and this will run a simple web front end on port 5002 where you can run or synthesize the audio. So let's give it a try. Switch to Firefox, and as you can see on localhost 5002, there's the web front end running. This is a test, super creative, Thorsten. And so, audio synthesize. But honestly, doing this for over 30 models didn't really sound like fun. So I thought, let's go back to the command line. So let's stop our TTS server process, and the other way we can synthesize audio is by simply run it on the command line, synthesize on the command line. So let's remove the minus server and just run TTS, same model name argument, and let's add an out path, call it out buff, and a text argument. This is a test. So now Koki TTS will synthesize. This is a test phrase, save it to out waveform file using that specific model. So as you can see, saving output to out buff. So this works without switching to the browser. But really, this doing 30 or more than 30 times, no, there should be a better way. So what I've done is I've taken my super beautifully formatted spreadsheet and saved it as totally ugly, but really great to parse CSV file. So let's show you that. And as you can see here, we have that simple CSV syntax with the language, the model path, and the translated text. And I've created a simple helper script which will parse that CSV file and will iterate over each row and simply run that TTS command. And the output is one waveform audio file for each supported TTS model. So, and I would say the next step should be to show you or to give you audio samples of every model and the RTF value for each model. So before doing this, please, if you like, now, and we'll see us next time. Bye. Good morning. This phrase is the reference to compare several available free TTS or TTS models. I am curious on the result. Good morning. This phrase is the reference to compare several available and free or TTS. I am curious on the result. Good morning. This phrase is the reference to compare several available and free TTS or TTS models. I am curious on the result. Good morning. This phrase is the reference to compare several available and free TTS or TTS models. I am curious on the result. Good morning. This phrase is the reference to compare several available and free or TTS models. I am curious on the result. Good morning. This phrase is the reference to compare several available and free TTS or TTS models. I am curious on the result.
Good morning. This phrase is the reference to compare several available and free TTS or TTS models. I am curious on the result. Good morning. This phrase is the reference to compare several available and free or TTS models. I am curious on the result. Good morning. This phrase is the reference to compare several available and free or TTS models. I'm curious on the result. Good morning. This phrase is the reference to compare several available and free TTS or TTS models. I'm curious on the result. Good morning. This phrase is the reference to compare several available. I'm curious on the result. Buenos días. Esta frase es la referencia para comparar varios modelos disponibles y gratuitos. Tengo curiosidad por el resultado. Bonjour. Cette phrase est la référence pour comparer plusieurs modèles ou TTS disponibles et gratuits. Je suis curieux du résultat.早上好，这句话是比较几个可用和免费的或模型的参考。我对结果很好奇。 Goedemorgen, deze zin is de evidentie om verschillende beschikbare en geldtests of TTS-modulen te vergelijken. Ik ben benieuwd naar het resultaat. Guten Morgen, dieser Satz
見出しそうな小さな瞬間が心の奥で輝いている。ありふれた日々の中に隠れた春先のような時間、君が笑ったその声一つ、それだけで世界が変わる。時計の針が進むたび、目に見えないものが形を持つ。消えてしまいそうな優しさを両手でそっと守りたいが、やりぐれに染まる空の色、歩き疲れた帰り道、一人きりで考えることも、そのすべてがつながってる。小さな幸せを抱きしめながら、今日もまた続いていく。ありふれた毎日がくれる本当に大切なもの、見汚しそうな小さな瞬間が心の奥で輝いている。時間は過ぎてゆくけれど、その中に刻まれる絆、君と分け合うその瞬間だけ、永遠のように感じる。ありふれた毎日の中で気づいたささやかな幸せ、君がそばにいてくれるだけで世界が優しくなる。鏡の中だけの世界に君が描く理想の形、手を伸ばせば消える蜃気楼、僕はそこにはいられない。満たされない空の心に僕の名前を刻むのは無理さ。自己満足のエゴの中で君が見てるのは君自身だけ。付き合えないその自己満足、僕は僕でいさせてくれ。壊れた時計が動き出す時、そこに僕はいないんだ。足元に響く乾いた音、君の言葉がこら回るたび、僕は遠ざかる影になる。気づかないふり、それが優しさ。僕の声も届かない、君が選ぶそのステージに飾るだけの人形じゃない。だから手を離してほしい。君が描く完璧な未来、その隅に僕の席はない。笑顔の裏に隠した涙、僕のためじゃないその涙。分かり合うって夢の話か、それともただの幻想の中。自己満足への鎖を解いて、自由な僕を認めてほしい。付き合えないその自己満足、君の影に染まりたくない。光と闇が溶け合う場所で、僕は僕でい続けるから。
のかけら届かなくて手を止めた日々空を咲くように風が叫ぶそれでも足は止められない心の奥秘めた願い誰にも渡せない光がある思いの通りに進んでこうよ涙さえも未来の地図に変えて新しい扉を開けるその瞬間君だけの道がほら広がる冷たい雨に濡れる夜でも心に灯る炎は消えない痛みも悔しさも飲み込んで強くなれたそんな気がする光が差したその場所には無数の選択肢が広がって迷うたびに選んだ答えそれが君だけの正しさだよ夜空に響く星の静かな声前を向けとそっと背を押す傷だらけの手が握りしめるのは未来の鍵確かな証明思いの通りに進んでこうよ全ての時が今を作り出す未来の空は君を迎えるから心の声を信じて進むだけただ君の手で選んだ一歩がどんな過去より輝く未来へ続く崩れたパズルのような心君の手跡がまだ残ってる何度つなぎ止めても崩れて無意味な答えだけが残る静寂の中響く割れた音それでもまだ君を探してる壊れたハートどうしてこうなるの繰り返す痛みが止まらない君が触れた後に灯る光も今はただ暗闇に消えてゆくきしむ音が胸を突き刺すたび忘れたいのに君が離られない壊れた心が問いかける意味誰が正しくて誰が間違いひび割れた感情のかけれたち拾い集めても形にならないそれでもギター変えて進む道の上君がいない空が今日も泣いてる夜の隙間にこぼれ落ちた涙君の影だけが僕を縛
なくしても消せない記憶が胸の中で静かに叫ぶ終わらない傷が描く物語僕だけの夢が崩れていくぶっと壊れたハート痛みを抱えたまま見えない未来へ進んでゆく君が残した言葉のドキュピが今も我が胸を叩き続けるぶっ壊れたハート消えないこの傷も君が触れた生かしだと思える夜が明けても忘れられないまま壊れた心でまた夢を見る夜の隙間から溺れる怒り揺れる涙は答えを探して君の名前をそっと呼ぶたびに胸の奥が静かにきしんでる隠した想い届かないなままで静寂が心を埋め尽くす涙の歌が響く君に捧げた声壊れた旋律に思いを重ねて流れる時間が癒すことのない深い傷跡を歌に変える一つ一つとれる日付に刻まれた君との記憶の影消したいのに消えないメロディー心を締め付けるとりんで星触れることもかなわない声がこの孤独の中で揺れている溶けてゆく言葉のかけらたちそれでも続く涙の旋律枯れた声で紡ぐ濡れ色と誰も知らない夢の終わりへ君がいた世界のかけらだけが静かに僕の中で歌い出す過去と未来をつなげない時間それでも歌うしかできなくて涙の歌が響く君の面影に届かない想いを夜に重ねて儚い光が包む静けさで最後の言葉を風に乗せる涙の歌を終える時が来ても君を思う心
静かに響く足音多い君の存在が近づいていく猫を見つけて夜の隙間で触れたい想いが風に揺れる寂しさの中でそっと寄り添う小さな奇跡を信じてる影の向こうに隠れる瞳語りかけるような沈黙の声遠い記憶が蘇るたび心が少しずつ溶けてゆく迷い込んだこの夜の果てに君が残したぬくもりを探すつかめないけれど確かに感じる猫のささやきが胸を揺らす冷たい風が街を包むのよ君のぬくもりがまだ残ってる寂しささえも優しさに変えてその小さな背中を追い続けるこの瞬間だけ真実になら君が僕に教えてくれたこと猫を見つけて静寂の中で消えない記憶が胸を灯す触れられないまま届くその声永遠に心に刻まれる猫を見つけて終わらない夢で君の存在が僕を包むこの夜が明けても消えない影それが僕の光になる夜に滲む光の隙間で何度も繰り返す君の名前戻らない時崩れた夢が胸の奥で静かに響いてる閉じ込めた感情が絡みついて届けないまま心を蝕む後悔の無限ループ抜け出せない君に言えなかった言葉だけ過去の影だが未来を壊していく繰り返す痛みを抱えたまま記憶の渦に飲み込まれる日々もしあの時が心を縛る消えた答えを探すたびに新しい傷が刻まれていく静寂の中ささやく声は希望じゃなく僕を追い詰める影時計の針が戻るとしたらそれでも同じ道を選ぶのか滅びた未来繋がらな
時間に戻りたいけど同じ景色で同じ痛みを何度も繰り返すだけのループ答えのない迷路に閉じ込められ出口を見つける術もなくて後悔の無限ループ終わらないまま君を失った記憶だけが胸の深い場所をきしませながら未来を奪い去っていく後悔の無限ループ壊れた心それでも何かを信じたくて夜が明けても繰り返すその中で君の影を抱きしめてる隣にいるのに心は遠くにある触れられる距離でさえその壁は崩せない見えない線が私たちを隔ててる何を言っても届かない声が響く埋められない距離がある近くても遠い二人すれ違うたびに痛み愛しさが苦しさに変わる時が過ぎても縮まらないこの紅白はおはようがない君の目に映る景色と私の中の孤独な闇同じ場所にいるのになぜこんなに遠いのか目が合う瞬間一瞬だけ近づくけどその後のちぼかが深い目を描いてゆくどうしてなのと問いかける
静かな夜に溶ける足音胸の鼓動だけが響いてる君の影を探してさまよう見えない未来が僕を絡めとる閉ざされた心の奥底で小さく息を止めてみる小さく息を止めて時を閉じ込めて君の記憶だけが優しく揺れる触れることのできないこの想いが夜の隙間で光を探す深く息を吸えば浮かぶ幻過去の影が胸をなでる沈黙の波が静かに迫るそれでも聞こえる君のささやき一瞬だけでも触れていたい壊れた感情が形を変えて忘れることを恐れてる僕が止まった時の中で息をする冷たい風が心をかすめるかすかなぬくもりも遠ざかるそれでも君がそこにいるならこの孤独さえも受け入れられる沈黙の中で僕は願う君と分かち合えたあの時を小さく息を止めて夢を描いて君の声だけが心に響く触れられないままのこの想いが夜明け前に消えることを恐れFrom a routing perspective. The title field's primary purpose is to define the document title. It can be either a string or an object. Let's understand both types with an example. The most straightforward way to set the title attribute is by using a string value. It is what we have in layout.tsx and page.tsx files. We can define the title field about code evolution, which renders the title tag with the same string value in the browser. For more flexibility, we can define the title field using an object. In the root layout, import and use metadata type for better IntelliSense. So import metadata from next. Metadata is of type metadata. And now we can specify title as an object. The object supports three keys: absolute, default, and template. The title.default property is useful when you want to provide a fallback title for child route segments that don't explicitly specify a title. For example, we can specify the default title as next. Next.js tutorial-code evolution. And if a child route segment, such as blog/page.tsx, doesn't have a title defined, it will fall back to the default title. So navigating to localhost 3000/blog will contain the title Next.js tutorial-code evolution. That is the default title set in layout.tsx. Second, we have the template key.
To create dynamic titles by adding a prefix or a suffix, you can use title.template property. This property applies to child route segments and not the segment in which it is defined. We can specify the template key as %s and then code evolution. Blog route, we can import the metadata type from next and define or export metadata object of type metadata, where we set title to blog. If we head back to the browser, you can see the title is blog, the type character, and code evolution. The blog page title, which is blog, replaces %s in the layout template title. We have code evolution as the suffix. Finally, we have absolute title. If you want to provide a title that completely ignores title.template set in the parent segments, you can use title.absolute property. We don't really need an absolute property in the layout, so instead, in the blog page, let's convert title to an object where we specify the absolute key and set it to blog. If we head back to the browser, the output will be just blog, as you can see. The template has been ignored. So this is pretty much what I wanted to cover about routing and SEO metadata in Next.js. Starting next video, we will explore all the details about linking and navigating with the app router. Thank you for watching, and please consider subscribing to the channel. I'll see you in the next one. Welcome back, everyone. In the previous videos, we explored Next.js file-based routing mechanism. We learned how to create routes for the root of our application, nested routes, dynamic routes, and catch-all routes. However, in those examples, we manually entered the URLs in the browser's address bar to navigate to the different routes. That is not how regular users would navigate our application. Typically, users rely on UI elements like links to navigate, either by clicking on them or through programmatic navigation after completing an action. Let's learn how to do the same with Next.js. Let's start with our first example, navigating from the home page to the blog page on click of a UI element. To enable client-side navigation, Next.js provides us with the link component. The link component is a React component that extends the HTML anchor element, and it is the primary way to navigate between routes in Next.js. To use it, we need to import it from next/link. Back in VS Code, in our primary way to navigate between routes in Next.js. To use it, we need to import it from next/link. Back in VS Code, in our root page.tsx, located in the app folder, import the link component. Now, in the JSX, we can use the link component to navigate to any route in our application. Here's the syntax. Link, the text is blog, href is equal to /blog. By importing the link component and providing the desired route through the href prop, we can create clickable navigation elements. In this example, the display text is blog, and the route we want to navigate to is /blog. After saving the file and refreshing the browser, you should see the rendered blog link. Clicking on it will successfully navigate you to the /blog page. Let's try this one more time to reinforce the concept. For example 2, let's navigate to the products page. So right after the first link, add another link. The text is products, and the href is /products. When we return to the home page and refresh, you should see the products link. Clicking on it will take you to the /products page as expected. It's also common to include a link to navigate back to the root of the application. For example 3, let's add a link in the products page to go back to the home page. Open the page.tsx file in the products folder and import the link component. Within the JSX, invoke the link component with the text home, and href is a / representing the root of our application. Returning to the browser, after clicking on products and being navigated to /products, you should see the newly added link to go back home. Clicking on it will navigate you back to the home page. Now let's move on to our next example.
navigating to dynamic routes. Currently, on the products page, we have a list of 3 products. Let's convert each product's heading into a link that takes the user to the corresponding details page. If you recall, the detail page's route followed the pattern /products/product ID, where product ID can be 1, 2, 3, and so on. In the page.tsx file, include a link component within each heading tag for all the 3 products. So link wraps the text product 1. href is equal to products/1. Similarly, we have product/2 and product/3. Now, when we return to the browser, all 3 products should be clickable. Clicking on product 1 will navigate you to the corresponding details page. And the same goes with product 2 and product 3. We have successfully implemented navigation to dynamic routes. Although hard-coding dynamic routes works fine like we see here, it might not always be possible or desirable. In such cases, you can pass the product ID as a prop to the component. Let's assume we have a route ID of 100 to navigate to. So const product ID is equal to 100. To navigate to this specific product ID, you can use string interpolation with the href attribute. So I'm going to duplicate a heading, change href to backticks products / curly braces product ID. We will do the same for the text as well. Product followed by curly braces product ID. Returning to the browser, refreshing the page, you should now see product 100. Clicking on it will take you to the details page of the same product. Our link component-based client-side navigation is working as expected. The one prop I want to highlight regarding the link component is the replace prop. On product 3, let's set the replace prop on the link tag. Now, in the browser, let's observe the back button behavior. Let's start from the home page. Click on products, click on product 1, and click back. Click on product 2. And click back. But when you click on product 3 and click back, we are brought to the home page instead of the product list page. So the replace prop replaces the current history state instead of adding a new URL to the stack. This is something to keep in mind. To summarize, the link component in Next.js allows us to navigate between routes using UI elements. To use it, import the link component at the top from next/link and include it in your components with the desired display text and the href attribute representing the route. Alright, thank you for watching. Please do consider subscribing to the channel, and I'll see you in the next one. In the previous video, we learned about the link component, which allows us to navigate between routes. However, we didn't cover how to style an active link. In real-world web applications, it is customary to style the link that corresponds to the currently active route. Not only does this enhance the user experience, but it also improves the overall aesthetics. In this video, we will dive into the process of styling active links. To save time, I have already set up some code behind the scenes. Let me walk you through what I have done. In the auth route group folder, I've created a layout.tsx file. Inside this file, I have defined a navlinks array that consists of 3 objects with name and href properties. The links are register, login, and forgot password. In the layout.jsx, we map over the navlinks array and render the link component for each item. We specify the link name as the text and href as the href attribute. We also assign a unique key for each item. In the browser, if we navigate to /register, we can see all 3 links as part of the auth layout. You can navigate between links, but they all remain on screen.
Now let's focus on how to style the active link. To determine if a link is active, Next.js provides the use path name hook. Let's import it and invoke it within our layout component. Import. This is a named export, so path name. Use path name rather from next/navigation. And then within the component, const path name is equal to use path name. However, when we save the file, we encounter an error in the terminal. Error, use path name only works in client components. Add the use client directive at the top of the file to use it. If you remember from video number 4 in the series, I mentioned all React components are server components by default, and hooks can only be used inside client components. Let's follow this instruction to fix the error. Add use client at the top of the file. Once we save the file, our code compiles without any errors, and we can proceed to use the path name constant. The constant represents the path in the URL. For example, for the register route, it represents /register, and for login, it represents /login. These values correspond to the href values in our navlinks array. With that info, within the map function, we can add const isActive is equal to path name dot starts with link dot href. And this should be inside the map method. Next, on the link component, add the class name attribute with a conditional statement. If isActive is true, the class is going to be font-bold and margin right 4. Else, text blue 500, margin right 4. These are Tailwind CSS classes. The font bold class makes the text bold, while text blue 500 makes it blue. We've also added some margin on the right-hand side of the element. If we now go back to the browser, with the register route being the current route, you can observe, if I inspect the element, the anchor tag is displayed with the font bold class applied. The other two elements, which are not active, have the class textblue 500. However, we don't see any changes in the UI because we deleted the global CSS file in the first video of this section. As a workaround, let's create a styles.css file within the auth folder and include add Tailwind base, add Tailwind components, add Tailwind utilities. Alternatively, you can reinstate the global CSS file, whichever you find easier. We will also import /styles.css in the layout file. Now, if you go back to the browser, you can see the styles in effect. The current route is displayed in bold, while the other links are shown in blue. This is how you can style active links in Next.js. In the next video, we will learn how to navigate programmatically to routes in our application. If you're enjoying the content, please do leave a like and consider subscribing to the channel. Welcome back. Previously, we learned how to navigate to different routes using the link component. Don't you know,
こえない声が君に届く日は来るの冷たいあの中君のぬくもりを求めているのにもう届かない Don't you know, don't you know 私のバースデーを Don't you know, don't you know 君に教えたのにこの寂しさの中で君を思い続ける忘れられない記憶が私を締め付ける Don't you know, don't you know 私のバースデーを Don't you know, don't you know 君に教えたのに夜空に浮かぶ星に願いを君と過ごした日々が戻るなら Don't you know, don't you know 私のバースデーを Don't you know, don't you know 君に教えたのにこの心の叫びが君に届くまで何度でも願うよこの愛の行方を遠く離れても君を忘れない心の中でずっと生き続ける Don't you know, don't you know 私のバースデーを Don't you know, don't you know 君に教えたのに静かな夜に一人で泣くもう一度だけ君に会いたい星降る夜に君を思う絶えに続くこの愛を信じていつもと同じ帰り道だけど今日は少し違う気がする君の影が揺れてる夜曖昧な予感が胸にささやく隠した思い出封じたはずの感情月明かりに照らされて蘇ってくる静かな風の音二人を包むようにまた心が揺れてるんだゆらゆらと心が波打つ抑えきれないこの気持ちすれ違うたびに増してゆく言葉にできないこのときめき揺れ動く世界に二人の影が重なる瞬間をただ待ってる星が消えない夜の中で果てなく漂うよ君と僕眠れない夜は夢を捕まえて君のぬくもりがこの手に触れるまで忘れたくない思い出遠くの星空 Bro, I'm okay. Why do I look tired to you?すれ違うたびに増してゆく言葉にできないこのときめき I don't know, I think I haven't slept, that's why. But I'm not tired at all. 夜の中で君と僕 「
かるネオン街のざわめきが遠く響くあなたといた場所も今はもっと遠くて届かないよ誰かが泣いている夜の静けさそれでも私は泣きたくない孤独な心を抱きしめてただ一人ここで待っている泣きたくない夜が続く心の中で叫んでる傷つけないで今はまだ終わらせたくないそんな夜こんな夜寂しさが押し寄せる声を出せなくても心は叫ぶ照らされた道一人歩くでも前を向く涙は今ここにはいない夜が続く心の中で叫んでる傷つけないで今はまだ終わらせたくないそんな夜 Yo, bro, how are you doing? All night? Like, how do you do that? Like, I tried like coding at 5 a.m. in the morning, and like, I couldn't because my brain felt like deep fried or something. By the way, I forgot to tell you something. Basically, just to specify, I did not my friend. My friend doesn't need the website, but like I meant by friend, like you know, my mom. She has a friend, and they both kind of need a website for their business. How much it's going to cost? Like for a landing page, you said like somewhere around 8k rupees, right? Yeah, I told them they say they're fine with it. It's like within their budget. Okay. The thing is like their time zone is very different. Like when it's morning for us, it's night for them. Okay. But did you already tell like the other guy in Subrenu? Okay. Why excited? Was it like the green project? Oh, okay, yeah, last month. That's crazy. Wait, so like how many freelance projects did you have like in total? Almost 10. So like about 6 to 8. Were they like complex?
So for that website, for oh wait, so for that project you charged like 35,000 rupees. Okay. Wait, it was like very complex. Yeah. Only half? Nah, that's crazy. You sure it's only half? Because like the website I sent you, there was like a lot of stuff. Okay. Oh, the client's project. Oh, wait. 1 second.
でにじむ景色の向こうに見つけた光を信じてるそれでも僕は歩き続ける壊れた心のかけらを抱えたままこの世界が冷たくても僕は生きる理由を探してる一歩ずつ進むたびに響く痛み誰も気づかない孤独な道のりそれでも消せないこの感情が僕をここまで動かしてきた背中を押すのは過去の記憶かそれともまだ見ぬ未来の声かわからないままでも前を向く僕はまだここに立っている冷たい風が頬を切るたびに僕の中の弱さが消えてゆく一人でいる孤独が怖くてもそれが僕自身の証ならば崩れた夢のかけらを拾い集めて新しい形を作り上げてゆくそうで僕は信じてるんだどんに遠くても手が届くとこの痛みが僕を強くするなら何度でも歩き出せるからそれでも僕はここにいるよどんなに孤独な夜でも生きていることを確かめながら明日を迎える準備をしているとろけるような音楽が流れる午後甘いソーダの泡が弾けるたびレモン色の光が揺れる窓辺君の瞳に映る世界が綺麗で君は知らないふりをしてるけどその心の奥が全部見えてるレモンソーダの味優しく溶けてく恥ずかしがり屋の君の横顔僕が知ってるその瞳の輝きありがとう伝えたくなる瞬間 Yo, bro, I'm back. 隠しきれない心の温度ほんの少し触れた手の震えレモン色の夢に包まれるようなその一瞬 I was just like talking to my mother. I wanted to ask her to basically discuss it, to discuss with her business partner about like what they specifically need first. 空のように君との記憶が僕を満たす静かな午後に差し込む They'll probably contact you by like Tuesday, I think. その小さな仕草目線の先も何もかもが僕の宝物になる君が照れくさそうに By the way, does like the other guy have Discord? 世界が少しずつ色づいてく Yeah. レモンソーダの味そっと溶か
not Subrainu, I meant like the other guy you were. Privately. Okay. What are you working on right now? Okay. Okay. Like yesterday, I was trying to help one of my friends like fix their Windows 10 computer. It didn't work, and it still doesn't. Yeah, but the thing is, like, how is he gonna upgrade right now if his Windows, like, it goes to recovery mode all the time? Wait 1 second. Okay, I'm back. By the way, I was also wondering, how are you going to split it? Oh, okay. Yeah. Cut? What cut? Yeah. So, like, if the price would be 7,000 rupees, you'd all get like an even share of 2,300 rupees. Good.
what would be better for you? WhatsApp or Telegram? Wait. Bit risky. Okay. By the way, for like a landing page, how long would it take you to like finish it? Wait, so 1 week designing and 3 weeks of like what, testing? Okay, nice. So, do you use AI to write HTML and CSS for you? Or do you just write it yourself? Oh, okay. Okay.
Wait, bro, I want to show you something real quick. Alright, so this is the web. Wait, can you see it? This is the website that AI wrote me. Rated from 1 to 10. What? A website for building websites? No, I asked AI to make me a website and it came up with this. Cloud AI. Cloud AI. What would you rate the website from 1 to 10? By the looks. Okay. Life's not living, brother. Good morning, by the way. Chris is here. Wait, were you talking to the chat? Yep, Chris is here. Krishna. Bro, Krishna the goat. Krishna the goat. The man, Yes, the myth, Krishna. the legend, the goat. Yes. Wait, bro, I gotta go right now. Yeah, I'll be cool. back in like an hour or something. Okay, bro. I'll be here. So Okay. whenever you come, like, But- just hop in, okay? What, bro? Whenever you come online, just hop into the PC. I mean, if you want, you can leave, because, like, it will be like an hour or something. Oh, cool. Then just, like, text me in the chat. I'll come. Okay, bro. Peace out.